If you are undersleeping by just 1 hour a day, your body takes 4 days to recover. Often when you touch the feet of your elders, what would they say? Jugjugg Jeeyo. One jog is 4.3 million years. It's written in our Vedas also. But in today's world, you tell somebody Jugjugg Jeeyo, बोले यार गाली दे रहा. Who wants to live longer? हमारे टाइम में 1970s में in India, probably 1 in every 50 or 1 in every 70 people was diabetic. Do you know the data today? What is it? 1 in 2. 1 in 2. 1 in 2 Indians are pre or diabetic. From 1 in 50. In last 50 years. The difference between a normal person and a diabetic, at 5 grams glucose, you are normal. At 7 grams, you are diabetic. There is something what we call as half-life of a product. Like coffee की quarter life is 8 hours. So अगर आपने coffee पी, उसका जो caffeine है, उसका 1/4 of the caffeine will remain in your system up to 8 hours. Omega-6, which is what we get from vegetable oils that most Indians use in their house, उसकी half life, which is 50%. Guess कितनी? 5 से 10 साल. Why do we age? So we age at a cellular level from a perspective that let's look at my hair versus your hair. So okay, let's even go back and double click on it. From the time our parents mated and that sperm met the egg, which led to the creation of first cell, right? Over a 9-month period, that one cell became 40 trillion cells. And the output of that is what we saw was a baby coming out, right? That baby, le lo, ya today you and I, le lo, we are all made up with 40 trillion cells. All cells are identical. Okay. Every single cell, whether you take a cell in your hair to your cell in your heart. There is a great scientist called Yamanaka. He won a Nobel for the Yamanaka factors. And he did that. He took a skin cell and rewinded it back and converted it into that single cell. And if you see all of this, you can go back and bring it to that single cell. So the journey starts with one cell. We are nothing but 40 trillion cells, and every single cell is identical. There is no change. Every single cell has something called as our DNA or our genome. And we get, in that genome is a code, like your binary code. That instead of a 1 and 0, that code is ATCG. And we get 3.2 billion letters of ATCG from our mom and 3.2 billion letters from our dad. So every cell has 6.4 billion letters, which is our genetic code. And there are 40 trillion cells 40 in the human trillion body. Cells. So just imagine one cell ka genetic code, if I were to put it in a straight line, it will be 6 feet tall. If I multiply that by 40 trillion cells, we'll go to the moon and come back 8 times. Damn. Utna code is there in one human body, right? But just look at the magic of Mother Nature, right? Every cell has 6 foot of our code, genetic code. How does it store it? So it stores it by spooling it. While it is spooling it, there are some genes which are turned on and there are some genes which are turned off. And this is a very intelligent spooling. So this is our genome. But a genome is like a DVD player, right? A DVD player has binary digits. You need a reader to read that and convert it into music for you and I to listen to that song. Correct. So that reader that we have is called the epigenome. Epi means above. So above the genome sits our epigenome. And epigenome ka kaam hai, every cell ka kaun sa gene on or off hai, it reads that. By reading that, it gives our cell the function. So it will tell, hey, you cell, you go and become hair in the case of Deepak. You cell, go and become eye. But not just you go and become a hair, but you will remain hair for the next 100 years. Because Okay. if that eye cell turns out to be hair, आपने देखा होगा बहुत जन की आई में आई नहीं है, खाली पूरी स्किन हो जाती है इधर. Yes. That is the reading of that cell got distorted. So the cell was told you become a skin where it should be eye. As you age, you will see I will have ears, hairs in my ears. So that cell is the same, but the reading has got distorted. So that cell is now looking like a hair cell instead of looking like a ear cell. Heart में भी वही होता है. When the cell starts malfunctioning, the cell starts doing something else. So जो मैं आपको DVD के analogy देता था.
So that information which is there in the DVD, in the genome, is constant. Reading of that information is this genetic player. From the time we are born, we then start manhandling this DNA, causing damage to it. आपने जाके एक समोसा खा लिया, वो DVD प्लेयर आप प्रिस्टीन लेके आए थे, फिर उसमें एक स्क्रैच आ गया. So when you hear the song, when that moment का आवाज आता है, screeching आता है. That screeching is aging. That is aging. The higher the scratches on the DVD, you are aging internally faster. Which is why when you go to a college reunion or you go to a marriage, you pick up any three people of the same age and you look at them and you can say one is aging faster, one is aging slower, just by looking at it. And you can tell. It's a manifestation by just looking at it. signs? किसी के स्क्रीन रिंकल हो रही है, किसी का फैट फेस बड़ा हो गया, किसी के हेयर्स ग्रे हो गए, कोई थोड़ा झुक के जा रहा है. By just looking at it, when you look at your mirror also, you will know manifestation, you will be able to see. The manifestation is the expression of these genes which is telling कि यार अब वो skin cell जो स्किन होनी चाहिए थी उसके जगह रिंकल होना शुरू हो गए, हियरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है, आपको चश्मे आना शुरू आ जाते हैं. Some of those things are somewhere your body from internal is aging faster, which is why we say that we have two clocks. One is what we call as a chronological clock, which is the number of years you are on Mother Earth. आपको पूछूंगा भाई आपकी एज क्या है, what is your age? 28. 28. So आपके आधार कार्ड में वो है, आपके पासपोर्ट में है. Correct. You ask me my age, I will say 52. So my Aadhaar card. But this is our chronological age. We also have something called as a true age or a biological age. This is how we are aging from within. Okay. So sometimes your biological clock is faster, sometimes it is slower. We want our biological clock to slow down. If it slows down, I will live longer. Correct. So I'll give you an example. Now, science has been able to even measure your biological clock. Through this damage that happens, there are histones which are on our genomes. You can measure the damage you have caused through a method called DNA methylation. तो ये टैग्स होते हैं, ये टैग्स को आप रीड कर सकते हो थ्रू द डैमेज यू हैव कॉस्ट. सो आपका सलाइवा लेगा, आपका ब्लड लेगा, आपका स्टूल लेगा, एंड देन दे मेजर व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डैमेज. Now, basis that damage that you have caused, they now have a lot of data of people's DNA or people's similar data. So they'll say, "Yaar, Prashant, tera jo whatever is this DNA methylation is very similar to somebody who is 58 years old. So my biologic clock from within is 58. So it's become weaker. So you are aging faster. I'm aging faster. So when I got this tested about 2 years back in the US, when I was 49, my biological clock at that time became 54, which means I was aging 5 years faster. Now, average an Indian lives is about 69 years, right? So if internally I was 54 and assuming I will live only till average Indian, which is 69, 15 years I had left. 15 more years to go. So add that 15 years to my 45. Hypothetically, I should die at 64. That's where, yes, I was very disappointed. But it is what it is, right? What can I do? So I said, okay, now let's start working on it. That's where I started working on all the foundational protocols. Sleep, nutrition, gut health, exercise, stress management. And after about a year and a half, I went back to the US and I got myself remeasured. When I was 51, my biological age had come down from 54 to 37. Fantastic. Now if I put the same math, that if I am internally 37 and if I die at 69, I have another 32 years. 32 years to go. So at the age of say 51, I had 32. 83. I can live till between 80 and 85. The only nuance is that the DNA methylation was of that particular day of that particular cell. So not all organs will age at the same age. Of course. Suppose if I am a smoker, my lungs will age far faster. So though my DNA may say I am 37, my lungs could be of a 70-year-old. My heart, if I am not doing cardio, will be weaker. If I am not sleeping, my heart is not getting the rest. So things like that, it's not the only way, but it gives you a sense for you to do that. So that's what I learned. So there are 9 hallmarks of aging. Epigenetic aging is one. So every time we multiply our cell or our cells divide, they pass on the DNA. उसकी एक tail होती है.
तो टेल को टेलीमियर्स बोलते हैं. जो अपनी शू लेस को अपने टाई करते हैं ना, उसको पता है एंड में देयर इज अ प्लास्टिक थिंग. Correct. Our telomeres are like that. Now Elizabeth Beth did this work, and she demonstrated that through this tail, whether it is longer or shorter, you can predict how long a person will live. For that she went on to win a Nobel Prize, right? So there are similar 9 hallmarks of aging, and there are different scientists working on different part of it. So that's how you kind of started understanding why we are, and that's where my biggest revelation happened, that your death is not a destiny. You can defy death. It's not that you will live finite. You are not immortal in that sense. But आज आप काम करोगे तो आप शायद 5 साल 10 साल ज़्यादा जी सकते हो. But more importantly, what I learned through my regular visits to US is, okay, so when I would go to weddings, right, often when you touch the feet of your elders, what would they say? Jugjugg Jeeyo. Jugjugg Jeeyo, जीते रहो, खुश रहो. जीते रहो. One jug is 4.3 million years. It's written in our Vedas also. So right, your blessing was live long. Jugjugg Jeeyo. 2 jug to Jeeyo at least. It's 8.6 million years. I am blessing you. You live. But in today's world, you tell somebody Jugjugg Jeeyo, बोलेगा यार गाली दे रहा है. Who wants to live longer? So I started asking people, why did you say this? यार, our elderly are blessing us, but तुम्हारे लिए that blessing is a curse. Invariably, somebody in our family at that point of time, somebody you know, family, friend के father, grandfather, किसी को अटैक आया होगा, किसी कोई गिर गए होंगे, कोई व्हील चेयर में है. We look at old age with lot of disability, where you have lost your health span, your ability to do things which you loved have come down, Right. where you become dependent on others. बोझ बन जाते हैं, right? So I don't want to walk with a walking stick. I don't want to walk in a wheelchair because somebody needs to pull me. Bathroom भी जाना at a certain age, you need somebody's help. So old age has a lot of negative connotation, which is why Jugjugg Jeeyo, you take a step back and people don't like it, right? मैं और आप बात कर रहे थे, suddenly Sally comes and will say, अरे अभी तेरी बात कर रहे थे, तू 100 साल जिएगी. हाँ. So 100 साल नहीं जीना. मैं क्यों नहीं जीना? Ask me, I've lost my father. So what I saw in the normal societal is a certain disdain for living longer, as if living longer is a curse. Whereas to somebody who has lost a father very early, I would want to live for 100 years for my daughter. And there is a different reason. Not because I want to be there to support them or anything. No. Because I get most happiness when I spend time with the people I love. I get most happiness when I can do things that I can do. I love playing cricket. I love playing golf. अपने Calcutta से I used to play at RCGC for so many years. Golf is a game you can play even at the age of 85. मेरे को खेलना है यार. I don't want to be in a wheelchair at my granddaughter's wedding. I want to dance at her Sangeet. And these are all possible. So that's where my second phase started. I started focusing less on the quantity of life, but on the quality of life. Because longevity has 2 words, lifespan plus health span. Longevity is not just the years in life, how long you live. It is also how well you live. And second phase of my journey is now completely focused on health span. And the reason is you may live longer, but you may not always have the entire health span. And my definition of health span is physical health, cognitive health, and emotional health. But if you live healthier, there is no way you will die early. वो possible ही नहीं है. So now my whole journey has been, and what I talk on my social media is all about increasing the health span and not just lifespan. Because if you increase your health span, lifespan automatically बढ़ी जाएगा. This is very interesting, Prashant. I've been watching a lot of your content, and I saw कि आपने पहले मेरे को एक बार मैसेज भी ड्रॉप किया था when I don't know, long back, and then when I watched a lot of your content, I got to know कि यार ये तो मैं कर रहा हूँ और प्रशांत बोल रहे नहीं करना है, तो अब क्या करें? But a lot of questions with what you mentioned right now, in terms of longevity, in terms of a simple
human body containing 40 trillion cells. There are lots of questions I had, Of and course. whatever I've prepared, I'm shutting this down because I don't think I need it anymore. Can I apologize in advance for that? Of course not. Of course not. I don't think I need it because there are so many. I usually don't prepare questions. Of course. It's usually free flowing, freewheeling conversations. Absolutely. And तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे को questions prepare नहीं करने पड़ते हैं. But because certain technical aspects अगर मेरे को discuss करने हैं, I need certain facts in data to sort of continue Of talking. course. But I have so many questions. Shoot, I'm here. Firstly, I love your T-shirt. अरे thank you. I love your T-shirt. पहले मेरे को लगा Hackett लिखा है. अच्छा. वो brand branded. फिर मेरे को लगा नहीं, this is biohacker. So love the T-shirt. What is it? This that you're wearing? So yeah, for me, the most foundational thing is sleep. I am very, very banal about sleep because all that I am reading and meeting scientists, what my big picture learning is if you are not sleeping 8 hours a night or 7 to 9 hours a night, doesn't matter how much you exercise, how well you eat, you will die early, you will lose your cognition, especially your cognitive health. And so the last 2-3 years I have got extremely serious about my sleep. So I track my sleep like a hawk. Okay. So this is a sleep tracker called Whoop. So I wear it. Got it. Whoop, if you're listening, I also want a sleep tracker. ये मेरी बालियाँ खाली है. अगर आप ये भर दे तो मजा आ जाएगा. A lot of questions around what you just mentioned. You mentioned about health, lifespan, and health span you mentioned, right? But before that, I want to talk about the de-aging aspect that you mentioned. You mentioned that when you were 49, your biological age clock was 54. was 54, and at 51, when you checked it again, it was 37 or 34, if I'm not wrong. 37. What changed? Clearly, you biologically de-aged, so you have a lot more years to live. What did you change in those 2 years that you decreased your lifespan, biological clock to about by like 17 years? What did you do differently? So what I did was, obviously once I realized this and you are talking to people and you read books, whether you read, Why We Age and Why We Don't Have to, a book called Lifespan by David Sinclair, whether you read True Age by Dr. Morgan Levine, whether I read Age Later by Neil Barzilai or the latest Outlive by Peter Attia. Ultimately, no matter, or Elizabeth Taylor's book on telomeres, everything ultimately comes down to if your foundation is not right, doesn't matter. And foundation came to these 4-5 things. What I have now built my own framework around it, which I call it my genes framework. So G is for gut health, E is for exercise, N is for nutrition, E is for emotional health, and S is for sleep. So I worked on all 5 of them. But Can you repeat? G is for gut health, E is for exercise, N is for nutrition, E is for emotional health, and S is for sleep. This sounds fancy, looks nice, इसलिए मैंने jeans लिख दिया. But for me, my opening batsman is sleep. Sleep. And a lot of people come and ask me. I only tell them that if you're not sleeping 7 to 9 hours, it just doesn't matter. क्या खा रहे हो, कितनी exercise कर रहे हो, it doesn't matter. So I did a lot of work, and it takes time to get disciplined around sleep. And when you go and double click on sleep, it's a completely different world. So I'll give you some small data, right? If you are undersleeping by just 1 hour a day, your body takes 4 days to recover. So as I said, within this framework, for me, sleep is paramount, most important. If I can say it's my Rohit Sharma, it's my Rahul Dravid, whatever you call it, it's Opening my opening batsman, right? And for me, that opening batsman has to score, because if he's not scoring, the entire team will struggle. So I give a lot of importance to sleep, and I feel sleep as an image issue in our society. We have now come thus far where we feel that undersleep is good. You walk into the office and say, have only slept for 3 hours, I was working, you will probably get reward, recognition and respect. You say I slept for 8 hours, आज मैं थोड़ा late हो गया, you will get punished. So a lot of that narrative needs to change, because if you are not sleeping, there is a reason you have to understand, right? We are about 300,000 years old as Homo sapiens, first humans. Plants came 460 million years back. Anything that is living from plants to humans sleeps. Animals sleep, ocean life sleeps. If sleep is not necessary from a biological standpoint,
And I think this is the biggest mistake Mother Nature has made. The reason why society is WHO has declared undersleep as an epidemic. That's how bad undersleep is in modern society. And the reason why sleep has got this bad name, in my view, is people have not understand why we sleep. And as I said, if sleep is a mistake, that's the biggest mistake Mother Nature has made and continues to make, because we are evolutionary, right? If you go back 300,000 years, our hands were of not this size. We had much larger hands. Our jaws were much bigger. Our brain was much smaller because we were eating like this. After fire came, after cooking came, our jaws became smaller, which gave more room for our brains to grow, which is why we are probably humans, right? And we are nothing but something from an evolutionary standpoint. If we are still sleeping for 8 hours, Mother Nature still wants to sleep. There are reasons why we sleep. There is not a single biological function that does not get accelerated when you sleep and does not get deteriorated when you undersleep. So just to give you a simple example, when you sleep, right, and I track my sleep, my heart rate is much lower because I'm not walking, I'm not running, I'm not doing any activity, right? So my heart doesn't need to pump. My cardiac output comes down, which means heart is resting. When heart is resting, my blood pressure will come down. Your blood pressure is one of the single biggest killer for heart attacks. Why? जो हमारी ब्लड की जो वेसल्स की जो लाइनिंग है, इट्स अ सिंगल सेल लाइनिंग, इसको एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं, राइट? जब आप एक्टिव होते हो तो उतना ब्लड पुश करता है, बिकॉज व्हेन यू आर एक्टिंग यू नीड मोर एनर्जी. एनर्जी के लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. आपके सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी बनाती है, उसको पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल के थ्रू जाता है. तो मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर जा रहा है, तो उतना आ ही जाता है. जब मैं सोता हूँ तो मेरा हार्ट रेस्ट करता है, माई हार्ट रेट कम्स डाउन, माई ब्लड प्रेशर कम्स डाउन, my cell walls are getting stronger. So the reason why you die of a heart attack, beyond all the stuff that people say, sleep is a very important metric. Blood pressure plays a very important cognition point of view. When you are sleeping, let's look at our brain. Our brain is 2% of our body weight, but it consumes 20% more nutrient. Just सुबह आप पॉटी करने जाते हो, जो आप पॉटी देखते हो आपके पॉट में, that is 80% of what you ate. 20% तो ब्रेन में है. हमारे यहाँ एक ब्लड ब्रेन बैरियर है, तो वहाँ से निकल नहीं सकती है. तो और वी स्लीप इन फेजेस. द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड अ नॉन रैपिड आई मूवमेंट, सेकेंड फेज इज कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट. जब एनरेम स्लीप में, व्हेन यू गो टू स्लीप, योर एनरेम साइकिल इज हायर देन रेम साइकिल. टुवर्ड्स द लेटर पार्ट रेम बिकम्स लार्जर. जब हम सोने जाते हैं तो पहले लाइट स्लीप होती है, फिर डीप स्लीप होती है. लाइट स्लीप में व्हाट ब्रेन डज इज ब्रेन इज क्लीनिंग अप. Today you and I are talking. Our brain is getting millions of bytes of information per second. Depending on where you are putting your focus and attention, your brain is tagging those moments and saying ये दीपक के लिए important है. आपको मेरा ये शर्ट का कलर याद नहीं है बिकॉज ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. मेरे सॉक्स का कलर इम्पोर्टेंट नहीं है, धोआ पे देखा है तो ब्रेन बोलता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये नॉन इम्पोर्टेंट है. जब आप लाइट स्लीप सोते हो तो ब्रेन सबसे पहला काम करता है, ये आपकी रैम को खाली कर देता है. क्योंकि अगर मैं रैम को खाली नहीं करूँगा तो कल सुबह और इन्फॉर्मेशन ले नहीं पाऊँगा. पर वो खाली करने के लिए आपको सोना पड़ता है. जगते टाइम में तो इन्फॉर्मेशन ऑल आ रही है, आँख खुली है. जब आप लाइट स्लीप में, ब्रेन इज कन्वर्टिंग ऑल योर शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड क्लीनिंग अप योर रैम सो दैट टुमारो मॉर्निंग दीपक कैन टेक मोर इन्फॉर्मेशन. ब्रेन फॉग आ जाता है जब हम अंडर स्लीप करते हैं. ब्रेन फॉग इज दिस. Brain is not being able to make sense of, because you've only slept for 3-4 hours, brain is not being able to clean up your RAM. Like your computer, your brain jams. जब आप डीप स्लीप में जाते हो तो पता है, जब यहाँ कोविड था या मलेरिया आता था तो हमारी वो ट्रक्स निकलती है जहाँ से वो धुआं स्प्रेड करता है कि मस्कीटोस को मार दो. तो जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, ब्रेन ये धुआं निकालता है हमारे सारे न्यूरल पाथवे में, कि ये जितने प्लाक होता है उसको रिमूव करता है, ताकि नेक्स्ट डे योर ब्रेन इज एनर्जाइज टू डू मोर. इट इज द ब्रेन्स वे ऑफ क्लीनिंग द पॉटी ऑफ ब्रेन. Alzheimer's is the worst disease mankind can have, which is, Alzheimer normally happens at older age. What is Alzheimer's or dementia? Where you can't remember anything. Just imagine 70 years of creating memories. Now you can't remember it. You can't share it with your grandkids. It's the most cruelest form of death. What is Alzheimer's? Alzheimer is this plaque building in your brain. So if you are not sleeping well, the plaque is not getting removed.
जब आप सोते हो हमारी इम्यूनिटी, whenever a bad pathogen enters your body, your brain signals to your bone marrow to release immune cells to go and fight them, right? ये पूरी इम्यूनिटी सिस्टम रात को जब सोते हो तब जाके आपको रीबूस्ट मिलता है इसका. आपने कभी सोचा है कि जब आप बीमार होते हो सोते ज़्यादा क्यों हो? Because the body needs more rest. Body Because needs more immunity, so body does not have a choice to make you sleep, because जब तक आप सोओगे नहीं वो immune cells बनेंगे ही नहीं. Your entire immune system gets a overhaul. Your brain, your mood, your happiness, everything is linked to your sleep. Your sex life is linked to sleep. Our sex hormones, चाहे अपने men में testosterone ले लो, women में estrogen ले लो, progesterone ले लो, 90% of this is released when you sleep. Heart health we spoke. Then the brain gets into the second part. जब REM sleep में जाता है तब आप सपना देखते हो. Dream is a very important biological tool to deal with depression, trauma and anxiety. Go back to a generation where our forefathers were hunter-gatherers. आप गए हंट फॉरेस्ट में शिकार करने फॉर योर फूड फॉर योर फैमिली. आपको एक एनिमल ने आके मार दिया, आपका पूरा हैंड इंजर्ड हो गया या लेग इंजर्ड हो गए. यू आर ट्रॉमाटाइज्ड कंप्लीटली. You go back to the tribe. If you don't get over this trauma, will you be able to go to hunt next day? When you sleep, in your REM sleep or in your dream sleep, REM sleep को also भी dream sleep बोलते हैं, उस टाइम में brain gives you an ability to replay this incident again and again, where आपने जाके उस animal को defeat कर दिया, trauma आ गया. कोई depression में होता है, you know what is the first line of defense that a doctor will or a psychiatrist will prescribe? Sleeping pills. Sleep is your only line of defense when it comes to depression, anxiety, trauma. When somebody loses a loved one, why do they sleep 18 hours? That is mother's nature way of putting the person to sleep, so that in a dream state you will be able to overcome. So dream stage, REM sleep, is where we overcome the bad experiences of our life so that we want to get up and live our life better. Dream is also where your brain is making connections. So कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना लाइफ में, यार आपने बहुत कुछ पढ़ा कुछ, बट मेरे को वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. टेल योर ब्रेन आई नीड आंसर टू दिस एंड गो ऑफ टू स्लीप, डीप स्लीप. During your dream sleep, brain will try to make these connections. Google, Larry Page always knew मेरे को कुछ चाहिए to change this. He couldn't zero in on it. He got the answer to build Google in dream. Theory of relativity. काम तो आइंस्टाइन ने बहुत किया था, बट वो उसको नहीं मिल रहा था वो आंसर. उसको उसका आंसर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ड्रीम में मिला. द पीरियोडिक टेबल इन केमिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन ड्रीम्स. Frankenstein was written in dreams. So a lot of people think sleep is a passive stage. It's a very active stage. So when scientists put people to sleep and put electrodes in their brain, so जब हम लोग अवेक होते हैं तो हमारे ब्रेन में साइकिल्स होती है, वेव्स, इसको अलग अलग है, गामा है, थीटा है, डेल्टा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे. तो वो ऐसे था अवेक. When you get into deep sleep, it is like this. It is far more active. It's almost like a tsunami coming, the wave coming down, coming, coming down, going up, coming down. It's a very active state of mind. The interesting thing is जब आप 8 घंटा सोते हो तभी आपको ये दोनों साइकिल मिलती है. And all sleep stages are important, from light to deep to REM where you dream, within dream, both dealing with your trauma, creativity, all of that is part of this. And abhi to we have not even touched the tip of the iceberg. Then we sleep in cycles. Why does an infant sleep for 14 hours? Everything Mother Nature has planned and prepared, right? वो बच्चे को, 1 साल के बच्चे को 12-14 घंटा सुलाएगा. आप ऊपर से नीचे कूद जाओ, कितना भी आवाज़ करना, क्योंकि जब आप सोते हो तब आपका ग्रोथ हार्मोन का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है. फिर when you move from there to age 15, when you hit puberty, so अपने केस में puberty, women के केस में it's their reproductive age from 15 to 35.
your sleep cycle, your circadian rhythm further shifts. You, Deepak, will do your best work at night. I can never stay awake beyond 10:30, 11. आपको लगेगा 10:30 मेरी सुबह होती है. हाँ होती है, बिकॉज मदर नेचर हैज प्लान्ड. जब वो हंटर गैदरर्स जाते थे और हंट करके आते थे, तो जो ट्राइब हंट करने जाती थी 35-40 प्लस, बिकॉज तब उनके मसल स्ट्रॉन्ग थे, उसको रेस्ट चाहिए था. विमेन ने अपना काम कर लिया प्रोक्रिएट, तो विमेन सोती थी, तो उसकी देखभाल ही कौन करेगी उस ट्राइब की? व्हेन यू आर स्लीपिंग, दैट वाज द जॉब ऑफ द यंगस्टर्स. That has carried forward evolutionary. So you cannot sleep at 10 o'clock, my friend, because your peak productivity comes at 11 and 12. Now for me to think that, and this is the biggest fight between mother and kid ना, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे को 10 बजे सो, 8 बजे सो. मैं उन पेरेंट्स को बोलता हूँ, भाई तू एक दिन 2 बजे सो के दिखाना. As difficult for is for parents to sleep at 2, it is very difficult for kids to sleep at 9 or 10. सर वो ना मम्मी पापा ये शो देखेंगे, उनको आप अच्छे से एक बार बोल दो कि इसको पापा जी इसको उठा हुआ रहने दो, एंड ये हेल्दी है उसके लिए. ये हेल्दी नहीं एंड है. रोलिंग एक्शन. मम्मी जी पापा जी दीपक को प्लीज 12-1-2 बजे तक काम करने दो, बिकॉज दैट इज वेरी गेट्स हिज पीक प्रोडक्टिविटी. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप 2 दिन 2 बजे सो के दिखा दो, तब मैं ये बैठ हार जाऊंगा. मेरे को ना प्रशांत पापा ना पापा बोलते हैं कि कोशिश करने से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तो तुम 11 बजे कोशिश करो, तुम सो पाओगे. मैंने कोशिश की 2 दिन, फिर वो 2 हफ्ते हुए. मैं अभी तक 11 बजे सो नहीं पाया हूँ. बट गिव देम अ चैलेंज कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं 11 बजे सोता हूँ, हाँ. आप कोशिश करो 2 बजे सोने का. दोनों एक वीक ट्राई करते हैं, जो जीता वही सिकंदर. बिकॉज Why is that? It's because of the circadian. rhythm has shifted. After the age of 35 or 40, same Deepak will sleep at 10 o'clock. But there is so much about sleep. Society doesn't know so much. In the US, there are sleep doctors who prescribe sleep. Sleep comes as a prescription. यहाँ पे सर मैंने नहीं देखा ये चीज़. इंडियन डॉक्टर्स में मैंने ये मेडिकेशन मोर देन मेडिटेशन, मैंने ये देखा है कि यहाँ मेडिकेट करवाने के लिए बोल देंगे और बोल देंगे कि ये कर लो, which is there's nothing wrong with it, but there is absolutely everything wrong with it. I disagree there. Okay. That is a problem with our medical system, and I did a reel on that. यार हर एक बहुत ब्रिलियंट बुक लिखी थी स्टीवन ल्यूइट ने, कॉल्ड फ्रीकोनॉमिक्स. आपने पढ़ी है? पढ़ना वो बुक. At the age of 26 he wrote, and Amartya Sen said that इसको प्लीज नोबेल प्राइज अभी दे दो. तो देना तो है ही इसको, बिकॉज ये जो काम 26 साल की एज में किया. दैट एंटायर बुक वॉज अबाउट मोटिवेशन, राइट? वाई स्कूल टीचर्स चीट, वाई सुमो रेस्लर्स चीट एंड स्टफ लाइक दैट. एंड इन दैट ही क्रैक्ड दैट पार्ट कि हर एक मेडिकल सिस्टम का मोटिवेशन ही है कि आपको मेडिसिन लिखना. तो ही इज एट क्रॉस रोड विथ योर हेल्थ. He doesn't make money when you are healthy, he makes money when you are unhealthy. So if you go to a doctor, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, he will not tell you कि boss, I'll give you a prescription, I'll give you 10 hacks, you can sleep well. You don't need medicine. फिर भी नहीं सो पाते हो तो मेडिसिन दूंगा आपको. But his first line of defense is to write metformin ले लो, metformin क्या, melatonin ले लो, stuff like that. They are trained for that. The system is made such a way. Hospitals, today hospital companies are listed. I have done my entire career in equity markets. Every quarter he has to show growth. अब बॉम्बे में दादर में ना एक कॉफिन मेकर था, उसका मार्केटिंग जार्गन था, समवन समवेयर इज डाइंग फॉर मी. ये मेडिकल सिस्टम का जार्गन है, समवन समवेयर इज डाइंग फॉर मी. सो आई एम सेइंग आई कांट, एंड दैट इज द पॉइंट. But the great part about Deepak is that we are now entering what Dr. Peter Attia calls the era of medicine 3.0, where you will move from medication to prevention. And हर एक चीज़ का एक समय आता है. We have now reached that stage of personalized medicine where you will understand you are the CEO of your own health. आपके हेल्थ के बारे में और कोई नहीं सोचने वाला है. बहुत अर्ली मेरे लाइफ में किसी ने मेरे को समझा दिया था कि there is only one person who will think for you in your life. That is you. And everybody will only think for themselves. You ever been to a cockpit in a plane? देखा है बाहर से? I've seen it from outside. हाँ, Outside, बाहर right? से देखा है. कितनी स्विचेस है, कितने आपको बोल प्लेन चला दो, आप चला दोगे? नहीं.
अपना हेल्थ इज़ एग्जैक्टली सिमिलर. ट्राइग्लिसराइड मॉनिटर करूँ, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करूँ, स्लीप मॉनिटर करूँ, मेरा VO2 मैक्स मॉनिटर करूँ, मेरा जोन 2 मॉनिटर करूँ, मेरा HB1AC मॉनिटर करूँ, कितने स्विचेस है, कितने. बट आपकी हेल्थ में आपके पास पायलट नहीं है जो आपका प्लेन चलाएगा, वो तो आप ही हो पायलट. अब टाइम आ रहा है वेर पीपल आर गेटिंग सीरियस अबाउट हेल्थ, पीपल आर गिविंग क्रेडेंस टू दिस, देयर इज अ टाइम फॉर एनीथिंग. सो यार, what I did, sleep was the first thing that I invested in. Then I invested in exercise. For me, nutrition comes last, to be very honest. I think nutrition is blown out of proportion. Amazon में जाके search करना एक बार, books on nutrition. You'll get 40,000 books. Books on sleep करना, शायद 10 book मिल जाए. Book on exercise करना, शायद 10 book मिल जाए. So I keep talking about this on my channel also, that when it comes to nutrition, I think we are majoring in the minors and minoring in the majors. किसी को कोई हवा नहीं है, सबको जो बोलना है बोलो. एंड मैं बोल रहा हूँ कर भी लो न्यूट्रिशन करेक्ट, बट इफ़ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर कट, इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल. सो आई डिड ऑल ऑफ दिस, ऑल द 5 things. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इमोशनल हेल्थ. यार इमोशनल हेल्थ इन अ वेरी डिफरेंटली पुट, योर वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर मी, आई थिंक माई वाई इज़ वेरी स्ट्रांग. I want to live longer for my daughters. I want to create more memories with them and their daughters. उससे बड़ी खुशी मेरे को नहीं मिलती है. मेरे घर में ना मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है. I mapped all my decades. So today I am 52. I have mapped 62, 72 and 82. Because I think I will die between 80 and 85. That's my last decade, 75 to 85. फिर नीचे मैंने अपनी डॉटर का नाम लिखा है. पहली डॉटर का, आर्शिया. When I am 52, she is 22. So when I am 62, she will be 32. Hopefully, I will have a granddaughter by then who will be maybe 1 year old. तो granddaughter. फिर मेरी second daughter का नाम काव्या. She is 12 today. When I am 62, she will be 22. So she will be at college. Then I have listed down the activities that I wanted to do with them at that age. Then I have back calculated, if this is the activity what I do, then what is the VO2 max I need. सो ट्रेनिंग आज शुरू करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इफ़ आई वॉन्ट टू फॉर एग्जाम्पल गो टू माई डॉटर्स कॉलेज डे एंड पार्टिसिपेट इन अ पेरेंट टीचर रेस एंड विन, तो आई नीड अ सर्टन VO2 max, stuff like that. So you became, if your why is strong, I always say you'll figure out the how. VO2 max क्या होता है? Okay. सिंपली अगर इसको एक 5 साल के बच्चे को समझाना है, तो VO2 max is the, every time you do any activity, your muscle needs oxygen. This is the maximum oxygen your muscle can use or reaches your muscle. Right? Okay. So just to give you a, अभी आप बैठे हो मेरे से बात कर रहे हो, at the age of 28, the maximum, your VO2 max today at a sitting condition will be about 15. Okay. 15 minimal per kg of body weight. ठीक है. अब आप उठ के दरवाज़ा खोलने जाते हो तो आपको थोड़ा और ऑक्सीजन चाहिए मसल्स को, बिकॉज आपने थोड़ी एक्टिविटी की है, राइट. सो अब दरवाजे तक गए तो दैट 15 विल बिकम 20. फिर आप बोलोगे प्रशांत मैं नीचे एक वॉक लेके आता हूँ तो मेरे को और मसल और ऑक्सीजन चाहिए मसल को, दैट 20 विल बिकम 25 और 28. फिर आप बोलते कल प्रशांत मेरा 100 मीटर का उसेन बोल्ट के साथ रेस है, तो आई इन दैट 100 मीटर मेरे को बहुत जोर से भागना है. सो दैट मैक्सिमम ऑक्सीजन दैट योर मसल कैन यूज इज कॉल्ड VO2 max. Maximum oxygen. It's also a predictor of lifespan, health span and longevity, but it's also a predictor of the maximum activity you can do. So I recently, I don't know if you've heard of something, there was a Dallas bed rest study that was done. So they took in 1966 a group of 5 people, 20 years of age, non-smokers, healthy people, एंड उनका VO2 max मेजर किया. VO2 max में क्या करेंगे, आपको एक साइकिल या एक ट्रेडमिल पे बैठाएंगे, करो 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 करो, यू कीप साइकिलिंग टिल अ टाइम बियॉन्ड विच यू कांट साइकिल, यू गिव अप. एट दैट टाइम जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके मसल को पहुंचा इज कॉल्ड योर VO2 max. सिंपली पुट, मैक्सिमम ऑक्सीजन यू कैन यूटिलाइज, योर मसल्स कैन यूटिलाइज. तो उनका VO2 max कुछ 42.7 ऐसा कुछ निकला था एट द एज ऑफ 20. फिर इनको 3 weeks ऑफ बेड रेस्ट में डाल दिया, सॉरी 49 था, 3 weeks of bed rest में डाल दिया. After 3 weeks, their VO2, while they were at bed rest, their VO2 max from 14 and had come down to 37. Because when you are bed rest, you are not doing anything, you are not moving, you are not exercising for 3 weeks. But the remarkable thing was something else. They measured that same men, these same 5 people after 30 years.
their VO2 max was higher than what their VO2 max was when they were in bed rest. So 3 weeks of bed rest is equal to 30 years of aging. This is the impact of sedentary lifestyle. अभी एक रिसेंट स्टडी आया था, लैंसेट ने किया था WHO के साथ, एंड इंडिया का डेटा था उसमें. 1 in 2 Indians, what they said, are not fit or live sedentary lifestyle. The number is higher, but they still said 50% Indians. Do you know what is the WHO's recommendation or our recommendation in terms of defining you are not physically inactive? 30 minutes of activity 5 times a week. पूरे वीक में हम लोग के पास 10,080 मिनट्स होते हैं. आपको 150 मिनट्स एक्सरसाइज करना है, 30 मिनट्स एवरी डे, which is 1.75% of the time. That also 50% of Indians couldn't do. And it could be any exercise. You want to Walking walk, also. you walk, you want to run, jog, play a sport, go and up and down the stairs, do anything. Just Anything movement. Physical, deliberate physical movement. 30 minutes. 50% of Indians don't do that. And 3 weeks of bed rest is more brutal than 30 years of aging. Why do you think Indians are not exercising enough? Lot of reasons. First, I think our country is against us. Okay. Why do I say so? We live in a country where at least 6-8 months गर्मी बहुत है. So गर्मी बहुत है तो there is a natural tendency not to move out. When I compare this with colder countries, ठंड होती है तो अपने को भी, अपने विंटर में सब जाते हैं बाहर. एक वो है. दूसरा, we are 1/3 the size of US with 3 times more people. So मैं और आप बॉम्बे में रहते हैं, कहाँ वॉक करने जाओगे आप? रास्ते में ही जगह नहीं है. पहले फुटपाथ थे, अब हॉकर्स आ गए. So there is no incentive for you to do. Third, we are not serious about health. उसी वो फुटपाथ पे जाके मैं समोसा चाट खा लूँगा, मैं भेल खा लूँगा, सैंडविच खा लूँगा, लेकिन फिर ऑटो लेके घर जाऊँगा. I think given how stressful our lives are, we need an outlet. और आई थिंक इंडियंस के लिए ये आउटलेट टेलीविजन है. पहले सास बहू की सीरियल्स थी, आज OTT हो गया है. So rather than doing that 30 minutes of walking which will give them the endorphins to make them feel good, probably Netflix give them. You don't know what Netflix CEO said, who is its competition? Yeah. He was asked. So I think a lot of reasons why we are inactive. But the good thing He is... answered health, right? He said sleep. Sleep. Yeah, he said sleep. So we want to sleep less, we want to, eat more, we don't want to exercise. If you look at when I was born in 1972, 72 के time में, if you look at the calories that we were consuming as Indians, we were consuming about 1800-1700 calories, right? प्रोटीन 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, कार्ब 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, और फैट्स उसमें 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है. वेटेड एवरेज आप पकड़ोगे तो 5 कैलोरी होती है. अगर मैं 1500-1700 कैलोरी खाता था तो मैं 300-350 ग्राम पूरे दिन में खाना खाता था. आज रफली मेरे हिसाब से हम लोग 3000 से 3200 कैलोरी खा रहे हैं. इन 50 years our calorie intake of Indians has gone up by 50 to 60%. In those days we did not have TV. तो हम लोग what was my go to place? You come back at 4 o'clock from school, सीधा छत में जाओ खेलो. सर मेरा भी यही था. जैसे कैलकाटा में when I was grew up in Calcutta all my life, स्कूल कॉलेज भी कैलकाटा में हुआ. फर्स्ट हाफ माई वर्क जो 2-3 साल काम किया वो भी कैलकाटा में था. तो आई स्टिल रिमेंबर माई स्कूल डेज, जहाँ पे मैं स्कूल से वापस आया और हमारे बिल्डिंग में वो लैंडलाइन होता था, क्या बोलते हैं उसको, इंटरकॉम. तो इंटरकॉम में फ़ोन करके बोल दिया कि 238 मिलाया. हाँ भाई मोहित रेडी. मेरे एक दोस्त था टीटू नाम था उसका. उसको फ़ोन करके बोला भाई क्रिकेट खेलेगा, आधे घंटे में उतर. कह रहा नहीं आधे घंटे में नहीं, 15 मिनट में उतर. मैंने कहा ठीक है. 15 मिनट में उतर गए. जिसकी बैट उसकी पहली बैट शुरू कर दिया. और सर एकदम पक्के धूप में खेल रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं कि चलो ठंड है, मौसम सुहाना है, खेलते हैं. दोपहर के 2 बजे आदमी कौन खेलता है, लेकिन हम खेलते थे.
so even when I hear or when I see my cousins or my younger sisters or brothers, they it's been replaced. They now have a cell phone. Games, They now have whatever, a game. right? They have an iPad. And I was reading an interesting study where it said that parents give their kids an iPad just so that they don't have to deal with their deal So with that the they don't kids, disturb. and they don't disturb and they don't cry. Young kids more often than not they have a tendency to cry more. तो उनको iPad पकड़ा दिया है 2 साल 3 साल की उम्र में, just so that they don't cry. It's affecting the health, right? So look at it, right? I am eating 50% more calories. Within that, if you double click, I am eating wrong calories. Right? तो पहले मैं लार्जली हम लोग घर का खाना खाते थे, आज लार्जली हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, थैंक्स टू स्विगी जोमेटो. पहले तो वो बाहर खाने के लिए भी जाना पड़ता था, Yeah. अब तो वो भी गया आपके हाथ Yeah. से, राइट? सो कन्वीनियंस हैज कम इन, राइट? सो एवरी डे you have a Swiggy Zomato coming in. Then I'm sleeping less. Over the last 50 years, we are undersleeping by 33%. You mentioned an interesting stat before. You said that if you're undersleeping by 1 hour, it takes Body takes 4 days to recover. 4 days to recover for 1 hour of less sleep. If you want to know what happens when you undersleep by 2 hours, right? ये experiment किया गया था. So undersleep by how much? So say 2 8 घंटा. hours of. 8 की जगह आप 6 घंटा सोते हो. Okay. राइट? एक दिन आपने 6 घंटा सोया, आपकी हालत नेक्स्ट डे कैसे होती है वो समझने के लिए नेक्स्ट डे एक दिन 8 घंटा सो, 5 बियर पी के ऑफिस जाओ. When the body language, work, productivity was measured, 2 hours of undersleep was equal to 5 beers and going to office. So we are eating more. We are eating more wrong. Okay, let's put this. So we have 2 hormones, ghrelin and leptin. Ghrelin is called our hunger hormone. जब आपको भूख लगती है, ग्रेलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो आपको बॉडी सिग्नल करता है, भाई दीपक कुछ खा ले यार, भूख लगी है. जब आप अच्छा से खाना खा लेते हो, हमारा लेप्टिन लेवल बढ़ता है हार्मोन का, जो ब्रेन को सिग्नल करता है पेट भर गया दोस्त, अब मत खाना. और क्यों आप कंटिन्यूसली खाते ही नहीं जाते हो, कहीं ना कहीं यू पुट दैट स्टॉप, राइट? So the leptin levels have risen. So these are 2 hormones. When you are undersleeping by, let's say, 4 दिन, 6 घंटा आप सोए, and when these subjects were measured, their ghrelin levels, which is hunger levels, hormones had gone up by 28%. ठीक है? Their leptin levels had come down by 18%. So दोनों डबल वैमी, इट्स लाइक बर्निंग कैंडल्स एट बोथ एंड्स. उतनी ज़्यादा मेरे को भूख लगी बिकॉज मैं सोया कम था. बट ये कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है, राइट? व्हेन यू आर अंडर स्लीपिंग फॉर 2 hours विद दिस रावण जैसी एपिटाइट, नाउ व्हाट दे रियलाइज्ड इज योर satiety comes down because leptin has come down. There was a 45% increase in the desire to eat salted, crunchy foods. Chips, bhujia. There was a 33% increase in eating obesogenic foods, which are called pizzas and burgers. And there was a 30% increase in craving for sugary foods like cola, mithai, chocolate. Now 50% आपकी कैलोरी बढ़ गई in last 50 years. अब 33% स्लीप कम कर दिए, आपकी एपिटाइट इतनी बढ़ गई, ऊपर आप रॉन्ग खाना खा रहे हो. ये सब को ऐड करने के बाद आ गया नेटफ्लिक्स, फिर आ गया OTT, फिर आ गया सोशल मीडिया, फिर आ गया आईपैड. तो मैं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ. नाउ व्हाट इज इट्स मैनिफेस्टेशन? हमारे टाइम में 1970s में इन इंडिया probably 1 in every 50 or 1 in every 70 people was diabetic. Do you know the data today? What is it? 1 in 2. 1 in 2 1 in 2 Indians are pre or diabetic from 1 in 50. in last 50 years. Diabetes is not a condition, Deepak. Diabetes is a disease in medical world. हॉस्पिटल्स में जाओगे तो डायबिटीज का आपको एक सेक्शन मिलेगा. इट्स अ डिजीज. व्हाट इज डायबिटीज? जब आप डॉक्टर के पास, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, एट वॉट एवर एज यू गो टू डॉक्टर, पहले चाहिए बोलेगा ब्लड टेस्ट करके ले, ब्लड शुगर कितना है.
नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अवर, मैंने बोला ना, कुछ भी करने के लिए सेल हैज टू मेक एनर्जी. To make that energy, it needs nutrition and oxygen. Glucose is body's preferred source of fuel. Glucose is what comes when you eat carbs. Right? Carbs is nothing but carbohydrate, which is glucose. So, हमारी body maintains the glucose level in a very fine balance because it is essential for life. Right? But what is that number? So, you will have about 5 to 6 liters of blood in your body today. And the glucose that you need, इसको glucose homeostasis बोलते हैं, the balance. Homeostasis is a balance, equilibrium. You need 5 grams of sugar at any given point of time in 6 liters or 5 liters of blood. ठीक है? अभी आपने खाने में से रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल खाई, या आपने एक बर्गर खाया, लोडेड विथ कार्बोहाइड्रेट. तो ये जो 5 ग्राम्स था वो 5 ग्राम्स हो गया 15 ग्राम्स. The moment that 5 becomes 15, all hell breaks loose inside your blood vessels. All that excess glucose the body cannot use for energy will go and latch on to the proteins in the blood. ये जब proteins को latch on करते हैं, for example, oxygen is transported through hemoglobin, RBCs. तो they are proteins. तो उसको जाके ये उसके ऊपर चढ़ जाता है. जब ये चढ़ जाता है, वो प्रोटीन ग्लाइकेट हो जाता है. It releases something called as oxidative stress. वो जाके आपकी ब्लड वेसल की लाइनिंग को वीक कर देता है, जो ये चीज़ स्मोकिंग करता है. तो बॉडी बोलता है यार ये मेरी लाइनिंग वीक हो गई तो मेरा प्रॉब्लम है, बिकॉज ये मेरे को एथरोस्क्लेरोसिस देगा, प्लाक डेवलप होगा, मैं मर जाऊंगा. तो बॉडी के पास रिपेयर मैकेनिज्म है. तो हमको और एक ऑर्गन दिया गया है जिसको पैंक्रियास बोलते हैं. पैंक्रियास इज इंसुलिन. तो द पैंक्रियास सिग्नल्स द हार्मोन इंसुलिन टू बी मेड. व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन लेवल्स विल राइज. इट विल, हमारे जितने सेल के रिसेप्टर्स है उसमें एक ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर होता है, उसको खोल देता है कि भाई तू ये एक्सेस, दीपक ने बर्गर खा लिया या कोक पी लिया या बहुत ज़्यादा काप्स खा लिया, यू हैव टू डील विद दिस बिकॉज इफ इट रिमेन्स इन द ब्लड आई विल डाई. सो ऑल द सेल्स फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज टेक ऑल द ग्लूकोज फॉर एक्टिविटी. बट मैं तो खा के टीवी देखने बैठ गया. तो बॉडी को इनहेरेंट मैकेनिज्म दिया है, जाके अब इसको स्टोर कर. द बिगेस्ट प्लेस वेर यू कैन स्टोर दिस इज मसल्स. Your muscles can store 400 grams of extra glucose as glycogen. So it goes and keeps storing over there. But मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो मॉडर्न इंसान हूँ. 2 घंटे के बाद मेरे को तो चाय बिस्किट चाहिए, मेरे को तो कुछ और खाना है. शिट, अब मसल में जगह नहीं है, तो लिवर में जाके स्टोर करता है. लिवर लेकिन 100 ग्राम स्टोर कर सकता है. सो इट गोज टू द लिवर. आवर बॉडी कैन स्टोर 500 ग्राम्स. अब चाय बिस्किट के बाद शाम का नाश्ता तो चाहिए ना यार, भेल खा लेके आ जाते हैं, और आ गया, अब क्या करूँ? एंड बॉडी हैज इनहेरेंटली गिवन अनदर मैकेनिज्म कॉल्ड फैट सेल्स. तो ये जाके फैट सेल में डिपॉजिट हो जाता है. फैट सेल्स, द नंबर ऑफ फैट सेल्स इन एवरीबडी इज कॉन्स्टेंट, बट दिस फैट सेल्स आर लाइक बलून. इट कैन कीप ग्रोइंग लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर. खाया जाओ. अभी तो सैंडविच खाया, अब शाम को घर जाते वक्त कुछ और चिप्स खा लेते हैं. फिर खाना तो खाना है ना. अरे यार रात को जग के काम कर रहा हूँ, चल यार कुछ और मंगा लेता हूँ स्विगी से. ये तो रुकता ही नहीं है. वी आर ऑन एवरेज हैविंग 8 मील्स टुडे, राइट? तो ये फैट सेल्स आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर. बट ये फैट सेल की भी एक कैपेसिटी है. आफ्टर अ पॉइंट फैट सेल भी बोलेगा दीपक अब माफ़ कर देगा अब तो. देन फैट सेल स्टार्ट्स लीकिंग फैट. जब ये फैट सेल फैट लीक करता है तो ये अपने ऑर्गन्स को जाको कन्वर्ट कर देता है. इसको विसरल एडिपोसिटी बोलते हैं. सो पहले जो फैट सेल्स में करते थे हमारे स्किन वगैरह के अंडर करते थे, तो सबक्यूटेनियस फ्लैट बोलते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटा है बट सबक्यूटेनियस फ्लैट है. बट जब ये विसरा में चला जाता है, ऑर्गन्स को रैप करना शुरू कर देता है, तो ऑल हेल ब्रेक्स लूज. जब ये लिवर के ऊपर चला जाता है तो आपको सिरोसिस हो जाता है. द नेक्स्ट स्टेप इज लिवर ट्रांसप्लांट. हार्ट में जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, यू विल हैव टू गो एंड गेट अ हार्ट ट्रांसप्लांट. किडनी में जाता है, किडनी फेल हो जाता है, आपको डायलिसिस हो जाता है. शुरू कहाँ से हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा, बट ये समय लगता है. पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इट डजंट हैपन ओवरनाइट, विच इज़ व्हाई यू डोंट फील इट. यू विल फील अरे कोक भी है, कुछ तो फर्क नहीं पड़ा. प्रशांत इतना ज्ञान दे के चला गया. अरे भाई एक कोक से नहीं होगा. बट एवरी सिंगल डे व्हेन यू आर गेटिंग 300, 400, 500 कैलोरीज. नाउ कनेक्टिंग विथ व्हाट योर क्वेश्चन वाज ऑन अंडर स्लीप.
people who undersleep by 2 hours eat between 7,500 and 12,000 more calories in a month. And what's the ideal intake like? Depends on body composition, but anywhere between 1800 to 2400 calories, depending on what activity you are doing. But we are consuming 7,500 to 12,500. More calories. More. 1800 to 2400 is on a per day basis. Of course. On a per day basis, if you are underslept, you are eating between 200 and 500 more calories. But that extra 200, 500 is all going in the fat and getting deposited. Because जब आपको रात को भूख लगती है, आप पनीर तो नहीं खाते हो, आप नट्स तो नहीं खाते हो, आप चिप्स खाओगे, भुजिया खाओगे, बर्गर मंगाओगे, right? So the point therefore being, when this glucose dysregulation happens, after a while your pancreas will give up. यार ये दीपक तो यार बंद ही नहीं कर रहा. रात को pancreas को नींद आती है, यार अब मेरे को रेस्ट करने दे, मैंने तो 12 बजे भी कुछ मंगा दिया. So you become something called insulin resistant, which means your pancreas will keep to doing more work for the same objective. The moment that happens, your blood glucose levels in your blood vessel rise, keeps increasing. When your doctors measure that blood glucose test, one day you go, your doctor will say you are pre-diabetic or you are diabetic. The difference between a normal person and a diabetic, at 5 grams glucose you are normal, at 7 grams you are diabetic. The difference is only 2 grams. क्या बोल रहे हो आप? एंड एक कोक के कैन में 30 ग्राम शुगर है. सर ये एपिसोड बहुत वायरल करने वाला हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज सपोज टू बी informative, this is supposed to reach the right audience. For young people who will be consuming this content, more so young people because it's social media that will go out on, stress eating होता है. क्यों होता है? Let's look at the science behind stress eating. So पहले stress, दो टाइप का stress होता है. Average stress is good for you. अगर ये stress नहीं होता जसप्रीत बुमराह के ऊपर, when 30 runs were needed in 30 deliveries, he would not have bowled his best. हार्दिक पांड्या के ऊपर स्ट्रेस नहीं होता तो विकेट नहीं गिरती. कि साहब को 16 रन डिफेंड करने हैं लास्ट. So some stress is good for all of us, right? It has been made. But when it reaches elevated level of stress, to deal with it, body produces a hormone called cortisol. Cortisol, okay. Cortisol जब प्रोड्यूस होता है, the conversion into fat into your fat cell goes up. So एक स्ट्रेस हुआ, उस स्ट्रेस को डील करने के लिए मेरा फूड इज माई ऑब्जेक्टिव और फूड इज माई वे टू डील विथ स्ट्रेस. बट बिकॉज इट इज स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल, द सेम फूड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मोर फैट, बिकॉज कॉर्टिसोल का एक फंक्शन वो भी है. बट भूख क्यों लगता है? Why are we? So भूख दो तरह की होती है. Sorry to cut. Hunger is of two types. One is a physiological hunger, which I measured through my continuous glucose monitor. What is that? When your blood glucose goes down below that 5, we only spoke of high, right? We did not spoke of low. जब लो होता है आपका ब्रेन फॉग हो जाता है, बॉडी को ब्लड ग्लूकोज नहीं मिला, कुछ भी हो बगल में मेरे को खाना है. आपका डॉक्टर बोलेगा पीपल हु हैव दिस कंडीशन दे प्लीज कैरी समथिंग स्वीट विथ यू, बिस्किट या चॉकलेट या कुछ भी हो, कुछ भी पी लेना, बिकॉज इट कैन नॉट गो दैट, राइट. सो जब भी आपको भूख लगती है, वेन एवर योर ब्लड ग्लूकोज लेवल गोज बिलो दिस, बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, भूख लगी है खा लो कुछ, फिजियोलॉजिकल. देन देयर इज अ साइकोलॉजिकल हंगर. Psychological hunger is what we think because of stress I want to eat more. No. You had stress at some day and you were walking past and आपने एक सेव पूरी खाई, आपको बहुत अच्छा लगा. You told your brain stress आने से सेव पूरी खाने से मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है. साइंस कभी नहीं बोलता है the best way to deal with stress is, you know what? I give you 3 best way to deal with. Just go and walk in the nature. You don't need food to deal with stress. And without phone? फ़ोन के साथ भी वॉक करो. बट आप नेचर में जाओगे, जू बीच चले गए तो आपको फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है. सो ब्यूटिफुल, सो सीरीन. द मोमेंट यू वॉक इन द नेचर, योर स्ट्रेस लेवल्स कम डाउन. मेरे को नहीं आने का है भाई, ओके, घर पे हो, गर्म पानी से नहा लो, गया स्ट्रेस. एकदम ठंडे पानी से नहा लो, बर्फ़ डाल दो पानी में, कोल्ड शावर,
a mechanism to deal with stress. Third thing, कुछ मत करो. Stress है, phone को बंद करो, नींद की गोली लो, सो जाओ. Food is not your answer to stress. But psychologically, because I was stressed and I had a food that I liked, now my brain thinks, dopamine मिला ना brain को. क्या stress to deal with is this? No. So Prashant, is this very similar to people who smoke, who are regular smokers? They say अगर चाय सुट्टा नहीं पियो तो पॉटी नहीं होती है. Is this psychological? Of course, this is psychological, right? It is psychological. But potty नहीं होती है has the whole conversation opens up into gut health. The only way to know your gut is, जिसको हम लोग leaky gut बोलते हैं, is या तो लूज मोशन है या पॉटी है. उस पर बहुत काम करना पड़ता है. बट अब वो आदत हो गई है सिगरेट. आई एम लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू स्मोक. सर यूजुअली मैंने यही देखा है कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ जो स्मोकर है, मैं आई हैव ट्राइड, आई हैव सीन पीपल अराउंड हु स्मोक एंड आई हैव ट्राइड टू स्पीक टू देम एंड टेल देम कि भाई व्हाट इज इट दैट मेक्स यू स्मोक और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्मोकिंग फॉर एंड और रादर व्हाट वाज योर कोपिंग मैकेनिज्म. तो तुमने स्टार्ट कैसे किया था? तो दे आर लाइक अरे कुछ तो स्ट्रेस हो गया था, उसकी वजह से स्टार्ट कर दिया और अब छूट नहीं पाया है. मैंने कहा ठीक है, छूट नहीं पाया, अब डू यू वांट टू लीव? कहते हैं हाँ छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं. एंड आई टोल्ड देम कि यार अगर एक एक करके थोड़ा कम करते रहोगे तो वो हो जाएगा. व्हाट इज इट, व्हाट मेक्स यू स्मोक? देयर लाइक एक तो स्ट्रेस है, दूसरा है पॉटी नहीं होती. नाउ इज दिस अगेन एक बार अगर the only way to test this is if they choose not to smoke for 5 days and see what happens to their body. So हम लोग साइंस में इसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स बोलते हैं. 2 ग्रुप को लिया, दोनों को डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे देखा एंड रिजल्ट देखा. बट हाउ एल्स डू आई टेस्ट इट साइंटिफिकली? करेक्ट. But यार, why do people smoke? I think it all starts, so 90% of people start smoking in their teens. 15 is the age when you start smoking. I was going to get there. What age? 15. Why? Is it because of people around? They think it's Macho. So 2 पार्ट. एक तो अगर आपके फैमिली में कोई स्मोक करता है तो आई ग्रो अप थिंकिंग स्मोकिंग इज ओके. is a norm. Okay. It's a norm, Fair. right? Or else if I see my friends smoking, some friend will pull you to try that one sutta. Correct. And then when you see Shah Rukh Khan, Ajay Devgan, all the people that you admire on screen, the Marlboro Man, पूरी ad थी, Robert De Niro की I think. तो smoking is sexy. Smoking makes you feel macho. Smoking makes you feel, makes you think you are cool. Cool. हाँ, of course. Cool तो उसके quotient ही लिए है. होता है, Correct. right? Correct. And the point is different what James Clear writes in his book Atomic Habits. जब पहली बार आपने सुट्टा लिया, सो हमारे में एक फील गुड केमिकल है या प्लेजर केमिकल या रिवॉर्ड केमिकल जिसको बोलते हैं. इट्स ऑल्सो अ मोटिवेशन केमिकल कॉल्ड डोपामिन. जब मैंने वो सुट्टा लिया, फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मेरे को दैट आहा मोमेंट मिली. इट इज़ द सेम व्हेन यू हैव योर फर्स्ट कोक और योर फर्स्ट पिज्ज़ा बाइट और फर्स्ट केक और डेजर्ट और व्हेन अ child first time licks an ice cream. It's the same process. Dopamine got released. The moment that dopamine I got used to it, then it becomes a habit. So it's a trigger which gives you a reward. But what happens is, what we don't realize is, over a period of time, these action becomes habit. And James Clear writes very beautiful in his book that it's very easy to form a new habit, but it's very difficult to get rid of an old habit. Which is why it's very difficult to ask people after 10 years of smoking to get rid of smoking. वो बहुत विल पावर है, बट वो विल पावर 2 दिन के बाद टूट जाता है. बिकॉज विल पावर पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए यू नीड द राइट मोटिवेशन. आई कांट फोर्स पीपल टू लिव लॉन्गर. देयर वाई हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग. इफ देयर वाई स्ट्रॉन्ग दे विल फिगर आउट. देयर वाई नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इफ दे वांट टू गिव अप स्मोकिंग. बहुत जन आप देखोगे, रणबीर कपूर, ही गेव अप स्मोकिंग द मोमेंट आलिया भट्ट गॉट प्रेग्नेंट. He realized, no yaar, I don't want to smoke because passive smoking kills equally as active. I don't want to kill my daughter. तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं. आपके कोई बहुत क्लोज है जो लंग कैंसर से मर गया, तो आप क्विट कर दोगे. बट सर, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू हियर. इसका काउंटर जो भी लोग सुन रहे हैं, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर स्मोकर्स, बट कोई भी हैबिट हो, राइट?
a lot of, I mean, the counter will be anything that is done in moderation is good. For example, there's this video or there's this video interaction or a podcast needs like a talk show where Tom Bilyeu asks Simon Sinek about instant gratification, and Simon Sinek mentions that gambling is not bad, too much gambling is bad. Alcohol is not bad, too much alcohol is bad. So anything that is done in moderation is good, and that is what he goes on to tell. Do you agree with that? Anything done in moderation is good? Principally, yes, but I am not a big fan of moderation. Are you a fan of extremes? No, I am a fan of consistency. I feel consistency trumps moderation any day. I'll tell you why. What Simon Sinek is saying or Tom Bilyeu is saying, I think in its core it is right. Anything in moderation is fine, right? But point is, we are human beings, right? I wish we lived in a very realist or idealist world. We live in a realist world. It's very easy to say one drink a day is good. But because we are humans, how do I stop at one? It is making me inhuman, right? तो बात सही है moderation, but मेरे को नहीं लगता people can follow moderation because everybody's definition of moderation is different. But मैं उस garb में 2 drink पीता हूँ because I think 2 is moderate. Or what if 2 is not moderate? What I am saying is, for me, consistency works better. How do you somewhere try to get rid of bad habits? The first thing, Andrew Huberman said that. And I spoke to once Jasprit Bumrah. And he also told me when he was coming out of injury, right, you have to start small. Andrew Huberman says this is in his way: crawl, walk, run. Why did Mother Nature make you first run, then crawl or walk? So when you are getting back at something or wanting to get rid of something, starts very small. That's when people say baby steps. Very baby step. So what I will do is, if I'm a smoker who's smoking say 3 cigarettes a day, I will say this next week I will, instead of 3, I will smoke 2. But I will smoke 3 times a day. तो मैं 1 सिगरेट आधी पी के छोड़ दूंगा. फिर उसके बाद वाले वीक का टारगेट है मैं दिन में 2 पीऊँगा, फिर 1 पीऊँगा, फिर मैं ऑल्टरनेट डे पीऊँगा. Let this take 90 days to at least come to reach that target. Don't try to. Problem what happens is everybody wants instant result. मैं 10 साल स्मोक किया, अब एक दिन मेरे को स्मोकिंग बंद कर देनी, नहीं होगा. 10 साल की हैबिट्स विल टेक एटलीस्ट 6 months or a year. And the moment you do that and you are kind to yourself, कि यार फिर भी मेरे को तलब लगी, मैंने, no problem. We go back to next day. People are too, and that's what I have realized when it comes to weight gain also. People are too harsh on themselves. You will need to be kind. If 10 साल आपने ओवर स्नैकिंग, ओवर खाना खाया, वो 1 महीने में तो वो वेट नहीं जाने वाला है दोस्त. 1 साल दो ना, क्या फर्क पड़ता है? So yeah, which is why I am not a very big fan of moderation. I am a very big fan of consistent. Be consistent. I will have 2 cigarettes every day for next week. That's a better narrative to give. And interestingly, यही है ना कि boring is monotonous, but do the boring. But यार मैं मानता हूँ, अगर आप में विराट कोहली जैसा पैशन है, you will do the boring. मैं, so why do I think my social media is a little different than a lot of other guys, and you will hear it. I just feel that I want to live in a realist world. I don't want to live in an idealist world. Sir, I'm sorry I'm stopping you here. I have this thesis जहाँ पे मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, मैंने इस पे रील बनाई नहीं है बट मैं बना लूँगा इवेंचुअली, जहाँ पे मैं बहुत लोगों को ये बोलता हूँ कि आइडियल इज़ अनरियलिस्टिक, आइडियल इज़ इम्प्रैक्टिकल. आप आइडियल वर्ल्ड में वॉर है, आइडियल वर्ल्ड में नहीं है, रियलिस्ट वर्ल्ड में है. तो आइडियल क्या है? इट्स नॉट आइडियल. आइडियल ये है कि आप हेल्दी रहो, खाना बढ़िया से खाओ, 10 बजे सो के 5 बजे उठ जाओ. आइडियल है ना वो, बट वो रियलिस्टिक है नहीं है. रियलिस्टिक नहीं है. रियलिस्टिक ये कि आप सुबह 3 बजे सोओगे. yesterday on the treadmill, I was running on the treadmill. I had a friend who was running beside me and she was telling me, यार दीपक मेरे को ना मेरे से सुबह उठा नहीं जा रहा है. मैंने कहा मैं लेट उठता हूँ, तो मैंने टाइम मेंशन किया, मैंने कहा मैं 10:30 बजे उठता हूँ. पहले तो जब मैंने बोला लेट उठता तो अग्री किया उसने, कहती हाँ मैं भी लेट उठती हूँ. मैंने कहा ठीक है. फिर मैंने बोला 10:30, कहती है ओ मैं तो 12 बजे उठती हूँ. मैंने कहा ये तेरे लिए लेट, तेरे लिए ये है, 12 बजे तो उठती है. मैंने कहा ठीक है. सोती कितने बजे है? 2 बजे, 3 बजे. कहते नहीं 5 बजे. मैंने कहा तू 5 बजे तक क्या कर रही है?
what is wrong with you? Why are you sleeping at 5? And she was like, "Arey, I don't know, नींद नहीं आती." She's like, "I'm having only one meal a day. I am skipping breakfast. मेरे को breakfast की आदत ही नहीं है. I am skipping lunch. मेरे को भूख नहीं लगती इसलिए मैं lunch नहीं करती. Lunch में मैं सत्तू पीती हूँ. I drink 1 glass of सत्तू. 1 घंटे 2 घंटे बाद I come to the gym. मैंने कहा यार तेरे बॉडी में कुछ है नहीं, तू बर्न क्या कर रही है? What are you burning? कुछ है तेरे बॉडी में? कुछ नहीं है, ना कार्ब्स है, ना प्रोटीन है, ना फाइबर है, ना न्यूट्रिएंट है, कुछ है ही नहीं. तो शी लाइक हाँ यार ये तो ठीक करना है. मैंने और वो कॉन्वर्सेशन वहीं ख़त्म हो गई. And gladly so we are having the conversation today, where we're talking about sleep and protein. So I'm sure I'm going to send a couple of our reels to her कि यार सो जा टाइम पे. And for women it is even more important. IF will work magical for men from a weight loss or because it helps you reduce your calories. All weight loss is only calorie restriction or calorie deficit. In women need a significant higher base calories to start their day. So it is 2x of men. Men need 15 grams, they need 30 grams. So all women who are listening to this podcast, you have to understand they have a different reproductive cycle from 15 to 35. Their body will behave very differently. After 35 when they hit their 40s में perimenopause and then menopause hit करेंगे. ये phase उनके लिए बहुत important है from all perspectives, sleep, nutrition, health, all of that. And for women, intermittent fasting 7 days a week anyways is not allowed. Exercising on a fasted state is, again, I won't say crime because everybody is different, that's how we started. But the point is, in larger population on a fasted state, it doesn't work. You will get maximum benefits of your strength training, whether it is weight training or your cardio, if there is some bit of glucose available, if there is some bit of protein available. And more important is after. So what happens is, when you wake up in a fasted state, your muscles are primed for something called as muscle protein synthesis. Which is where your muscles will build. Now again, you said because a lot of our viewers are going to be young. Yes. You have to understand, you build muscle mass from the age of 15 to 35. Prashant Desai at 52 cannot build muscle. I can't. After 35 to 40, there is something called a sarcopenia will hit all of us. Which is, I will lose 1% muscle mass every year. But that is not all. I lose muscle strength 3 times faster. And I lose muscle power 8 times faster. Which is why आपके granddad शायद वो खोल नहीं सकेंगे क्योंकि उनकी grip strength नहीं है. But I still go and strength train 3 days a week. I lift heavy weights. कहीं दिख रहा है मैं 12 साल से lift weight कर रहा हूँ. क्योंकि मैंने जब lift weight शुरू किया मेरा window to build muscle had gone. So all youngsters who are watching between the age of 15 to 35, this is your time to build muscle, which is quantum of muscles. जो आप बल्क कब बोलते हो, जो मसल बिल्ड दिखता है वो 15 से 35 में ही करना है. दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू. योर मसल आर प्राइम्ड. बट इफ़ यू वांट टू बिल्ड मसल मास, खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल मास नहीं होता है यार. मसल मास बिल्डिंग इज अ ट्रायो ऑफ स्लीप, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन. If you want to build muscle mass, you must have, whether you are a male or a female, between 1 to 1.5 gram of protein per kg of body weight. What is your weight? My weight is, I can't disclose, but my weight is. Okay, let me say if I was. I'll openly say it. My weight is 83 right now. Say 80 लेते हैं for 80 ले लो हाँ. So you need 100 to 120 grams of protein to build muscle. To maintain 0.8. But to build, and everybody must build muscle mass. Because अगर मेरा starting point इतना है ये तो मेरा sarcopenia भी हो रहा है, I'm preserving muscle mass. Right? I'll give a interesting statistics. So if you are more than 65 years older, a woman, and if your dadi has a fall, ठीक है, and breaks either her femur or her hip bone, ठीक है, there is a 50% chance that she will die in the next 12 months. Okay. 75% chance that she is not going to regain back her health span or her mobility after that fall. So you've already become immobile at the age of 65 when you fell. Now, the only way to prevent that fall is, let's say I'm going down the stairs and I fall, तो कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, grip strength आ जाती है. जब आप गिरना सडनली गिरते हो, स्लिप हो गए, तो व्हाट इज योर फर्स्ट, आप कहीं ना कहीं हैंड को यूज करोगे टू सपोर्ट. करेक्ट.
अगेन यहाँ पर ग्रिप स्ट्रेंथ आ जाती है. ये ग्रिप स्ट्रेंथ डिराइव होती है मसल स्ट्रेंथ से. बट मेरा मसल स्ट्रेंथ 3 times फास्टर देन मसल मास होने वाला है आफ्टर द एज ऑफ 40. माई only objective at the age of 52 is to slow down this decline, and for that I have no choice but to overtrain than you. Because you are gaining muscle, I am losing muscle. So if this podcast is being consumed by say an average 25-year-old who is not exercising, what should that person be doing to maintain a very healthy lifestyle? Very healthy का भी नहीं पता है मेरे को, but important that they lift. Imperative बता दो आप. Imperative क्या है? Imperative 3 days a week they have to lift heavy. Go to a gym. Lift weight. Because the more you lift weight, your muscle will come to a stage of fatigue, will break. The repair process, आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं जब आप रिपेयर प्रोसेस शुरू होता है एंड यू आर गिविंग एडिक्वेट प्रोटीन 1.2 to 1.5 grams a day. दैट रिपेयर प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटीन द मोमेंट यू आर स्लीपिंग बॉडी तो फंक्शन कर रहा है तो प्रोटीन लेवल्स कम डाउन, राइट. अब मैंने स्ट्रेंथ ट्रेन भी किया तो मेरे को और प्रोटीन, जब आप ये मसल को रिपेयर भी करते हो और प्रोटीन देते हो तो इट डजंट हैव टू डिप इनटू द प्रोटीन अवेलेबिलिटी, यू आर एट मीडियम. बट अगर आपने एडिक्वेट प्रोटीन नहीं दिया तो ये प्रोटीन गैप हो गया. नाउ अगेन फर्स्ट हैव टू कम टू बेस लाइन, सो आई डोंट गेट फुल इम्पैक्ट विथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग and adequate protein. So I have a definition of pre-workout. What do you think pre-workout is? Or pre-workout meal is? Pre-workout could either could be different realms of pre-workout. Pre-workout one could be say like a diet where you have certain amount of food before your workout. Two could be in terms of like a warm up, you get your body warmed up before the workout. So those two could be okay. Now for me pre-workout is a very different definition. That's what I learned from Andy Galpin. Pre-workout is from the time your workout ends till the time of your new workout. This window is new pre-workout. It is not what you eat before workout. It is what you eat between the two workouts. So suppose मैं strength train Monday और Wednesday Friday करता हूँ. Monday 8 बजे मेरी strength training खत्म हुई और Wednesday 8 बजे सुबह मेरी strength training शुरू होगी. तो what I eat between Monday 8 a.m. to Wednesday 6 a.m. is my pre-workout. This is where you have to fuel up better. Protein is your friend. Every single youngster 25 years must do 2 things. Number, they must lift heavy and they must have adequate protein and they must build muscle because after 35 ये decline compulsory है. होना ही होना है. होना ही, वो आप कुछ भी कर लो, साइंस है. और the problem is a decline ना, when you see charts it will show this decline after 35, male, female, whatever. But individually जब आप देखोगे ये ऐसा नहीं होता है, ये तो एवरेज है पॉपुलेशन का. It is like this. It's a decline is so heavy you will not even realize. Very important that youngsters lift heavy, go to the gym, and trust me, to all the girls or all the teenage girls watching this, by going to the gym women will not bulk up like men. Physiologies are different. To bulk up like a men bodybuilder, the kind of strength training that you will have to do and the amount of protein that you will need to eat, 99% teenagers will not be doing that. But when the teenagers go and put on muscles, their body will look toned. They will have a shape of a body that they will thank for their future life. Third, it will help them in their reproductive years. More importantly, मैंने ये पहला benefit बताया all teens को. Second, when you build more muscle, muscle is your body's biggest reservoir to store glucose. अपने बात कर रहे थे ना, आपने ज़्यादा खाया, अब मसल में जाके स्टोर होता है. The higher the muscle mass, so your metabolism goes up, your third benefit. So you get stronger, you can eat more without worrying about your blood glucose levels, and because you have higher muscle mass, and the muscles will be releasing this glycogen when you are doing your exercise, your metabolism goes up. अब इससे और क्या benefit चाहिए आपको? But your window is 15 to 35. कर लो. बट सर ये ना बड़ा मेरे को लगता है कि अगेन दिस इज वेरी आइडियल, बट लिविंग इन अ
and very specifically, so we discussed about this, living in a country like India, jahan we are not a very fit country, right? Of course not. One in two are unfit, right? Ek to a lot of problems when we spoke about why is India not fit. A lot of people are like, the weather is not conducive. Walk करने जाओ तो आप walk करते करते आपको चाय का दुकान दिख जाता है तो आप चाय पीने बैठ जाते हो. A lot of things, right? एक विल पावर भी होता है इंसान का कि वो वर्कआउट करे. अब पता है आइडियल है करना है लेकिन फिर भी नहीं कर रहे. पता है खाना सही खाना है लेकिन फिर भी नहीं खा रहे. सो इज देयर अ वे टू सॉर्ट ऑफ इज देयर अ इजी वर्कआउट strategy? Is there an easy way out? I know this is a very stupid question for me to ask, but is there an easy way out? Because as people who don't want to work out, they despise the gym. I'll give a very easy way for the youngsters. हाँ. Both for men and both for girls and boys. Go to a gym. Guys, go to a gym which has very good looking girls. Great motivator. There is no better motivator than girls. Same applies to girls. Go to a gym where good looking hunks. How difficult it is to find a gym and a time when you have good looking guys and girls. It's a great motivator. आप लेके जाओगे, आप जाओगे, कुछ नहीं तो वो लड़की को देखने जाओगे या उस लड़के को देखने जाओगे. It's a great motivator. However, this is what हम लोग बोलते हैं extrinsic motivation. But your habit will come out of intrinsic motivation. मेरे से ना सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है. मेरे को लगता है कि अगर मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो आई हैव टू वेक अप विद अ पर्पस. करेक्ट. मैं ये सोचता हूँ कि सुबह अगर मैं 6 बजे उठ भी जाऊँ तो मैं क्या करूँगा. करेक्ट. पूरी दुनिया सो रही है, मैं किसके साथ बैठ के काम करूँ. करेक्ट है. जब मैं लेट सोता हूँ एज अ 28-year-old adult who works not a 9 to 5 job but a job where there is more thinking and writing involved, there is consumption involved, I feel रात को मेरा काम बहुत easily आराम से हो जाता है. My thinking brain works better, I can write better, I can think better. And I also told you there is a reason why you do that. Yeah. Because mankind was created in a manner where people at your age will do their best work late night. Sorry. Yeah. So you mentioned about that. And तो मैं जल्दी, जैसे आज मैं जल्दी उठा 8 बजे. जल्दी is very relative. जल्दी from what? 100. मैं 10:30 बजे उठा, आज मैं 8 बजे उठा. 8 बजे क्यों उठा? क्योंकि I had to go for breakfast. कल मैं 10:30 बजे उठा thinking कि हाँ ठीक है कुछ काम नहीं है. तो I have to attach an external motivation to get up in the morning early. A lot of people are like, get up early. उठो 5 बजे उठो, 6 बजे उठो. But when I ask them कि क्या करना है तो नहीं, I have to start the day early. अरे day early and do what? So मैंने अभी एक रील बनाई, अभी तक पोस्ट नहीं हुई है. Is exactly about that. Wake up at 5 a.m. is the best time to wake up. And then I say lie. This is one of your templates. मैंने देख लिया कि ओट्स वाले में भी आपने किया. क्यों भाई, किसने बोला 5 बजे? रॉबिन शर्मा ने किताब लिखी है भाई. किसी. So in sleep there is something called as a sleep chronotype. मेरे को स्लीप पे भी एक चीज़ डिस्कस करनी थी, बट आप कैरी ऑन. Sure. We'll speak about it. But to cut, before I come into that, to all the youngsters, first get an extrinsic motivator. Nothing can be more for guys motivator than girls, and for girls than guys. Once you get habituated, get an intrinsic motivation. And मैंने देखा है यार, थोड़ा कंसिस्टेंसी आ जाता है ना, you will see your body shape. फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है जिम जाने. करेक्ट. किसी ने, कोई लड़की ने बोल दिया लुकिंग स्ट्रांग, लुकिंग फिट, लुकिंग गुड एंड वाइस वर्सा, बस फिर तो खत्म हो गया, हैबिट बन गई. राइट. स्टफ लाइक दैट. बट कमिंग टू आवर कॉन्वर्सेशन ऑन स्लीप, राइट. सो वी स्लीप एज पर आवर chronotype. And there are 3 chronotypes. Actually 5 है, but अभी 2. Morning person, evening person, and something called in between. Right. What chronotype you or I are is not decided by you and I. Unfortunately, it is decided by our parents. There are 9 sleep genes which decide what chronotype you are, and that we get from our parents. बहुत tough है उसको change करना. So science is a definition of good quality of sleep. First, the quantity matters, which is 8 hours. Then quality matters, both REM and NREM sleep. Third is consistency, which is you have to sleep consistently. अब एक दिन 8 घंटा सो लिए, फिर 3 दिन नहीं. Consistency, as I said, trumps everything. Fourth is timing. What is timing? Timing is you have to sleep as per your chronotype, right? So अब आपको पता नहीं है मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, इन बिटवीन हो, ये तो आपको
विरासत में मिली है, but you need to know. So your viewers can go to Google and just do MEQ, morning evening questionnaire. कुछ 15-20 सवाल है. Honestly answer that, it will tell you whether you are a morning person, you are a in between person, or you are an evening person. इन बिटवीन पर्सन क्या होता है? You are neither morning nor evening, in between. हाँ, मतलब उसका क्या मतलब, डेफिनेशन? correct. हाँ. So morning normally at my age are people who will sleep between 8 p.m. and 10 p.m. Evening people will sleep between 12 and 2 p.m. At my age. 2 a.m. Sorry, 12 and 2 a.m. at my age. In between are people who will sleep at 10 p.m. and 12 p.m. Na idhar ke, na udhar ke. Interesting, when they did a random study on this, random people, they found 1/3 of the human population is morning, 1/3 is evening, and 1/3 is in between. Remarkable. Equal. 1/3, 1/3, 1/3. So it Okay. doesn't matter. So you sleep as per your chronotype ना भाई. So when your friend at the gym said यार मैं 5 बजे उठती हूँ, अगर उसका chronotype सोती है 5 बजे. 5 बजे सोती है, sorry, उसका chronotype evening, and because she is younger in circadian rhythm has shifted, it's a good time. Important is not sleeping at 5. Important is at 5 does she sleep for 8 hours. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. अगर वो 1 बजे उठती है, I am very happy. सर, आई हैव अ रिजर्वेशन देयर, और रिजर्वेशन क्या, इट्स मोर स्टडी बैक्ड. वो Yeah. मैंने कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा था कि इफ़ यू आर स्लीपिंग फ्रॉम 10 to 6, विच इज़ 8 hours ऑफ स्लीप, वर्सेज इफ़ यू आर स्लीपिंग फ्रॉम 3 to 10, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप में फ़र्क है. डू यू अग्री? Till I see data, how do I agree or disagree? If data says that, for me, show me the data, I can say. What I have so far learned in this 4-year journey of meeting the best sleep scientist is, you must sleep as per your sleep chronotype. Morning, in between, or evening. You must sleep as per your age. So it is criminal for me to make a 25-year-old sleep at 8 or 10 p.m. I am wrong, they are not wrong. It is also criminal of a youngster to sleep at 12 or 2 and not sleep for 8 hours. Unfortunately, our college timings are such that you will still sleep at 12 or 2 and wake up at 8 or 9 to go to college. If that is the case, you can't help it. Because you are doing your best work midnight, please do your best work midnight, right? Because ये best work के हिसाब से आपकी life बनेगी, आपका work बनेगा. So for me, it doesn't matter what, as long as you are sleeping as per your sleeping chronotype and giving 8 hours of sleep. अगर आप 8 घंटा सो गए 7 से 9 के बीच में, 8 is also not the right way, 7 और 9 के बीच में, you will get adequate NREM sleep and you will get adequate REM sleep. Your quality of sleep is matched. In what you are saying, if somebody shows me data कि यार इस स्लीप में इनका NREM और REM की परसेंटेज ये थी, या इसमें ये थी, डिस्टॉर्टेड थी, कितनी वेक इवेंट्स थी, probably I may change my point of view. But as of now, nothing suggests that that's the right answer. एक स्टूपिड सवाल पूछ लूँ? बोले ना सर, मोदी जी कितना घंटा सोते होंगे? कोई आइडिया नहीं है. एक अंदाज? सो 2 पार्ट बता दो. आई थिंक 4 से 6 घंटा सोते होंगे इज वॉट ही क्लेम्स. नारायण मूर्ति सेज दैट एट योर एज यू शुड वर्क फॉर 70 hours a week. Now that's an interesting question. I'll give you why Modi ji may sleep for 4 to 6 hours, because my mother also sleeps for 4 to 6 hours. She is 83. Your circadian rhythm after the age of 70 will again shift. मोदी जी कितने साल के होंगे? 80 होंगे. 75. So जब आप older age में जाते हो, you will still get your 6 to 8 hours or 7 to 9 hours of sleep, but you will get it in pockets. You will not be able to sleep throughout. तो generally you will see my mom रात को सोती है, but she will not sleep for 6-7 hours. वो 4-5 घंटा मैक्सिमम खींच सकती है. फिर वो उठेगी सुबह, हैबिचुएटेड है, बिकॉज I will get into that age in next 10-15 years time. I'm habituated waking up at 5 o'clock because my circadian rhythm has shifted and I'm a morning person, right? तो मैं उठ तो जाऊँगा 5-6 बजे, like my mom today. मैंने whatever अपना काम किया, she will have her breakfast, she will do her whatever. Then I see after taking her bath, she'll again go off to sleep for 1 घंटा 2 घंटा. Then after a while she again. Bouts of sleep here and there. They get their 8 hours in this manner. मोदी जी बीच में कब सोते होंगे? मेरे को नहीं पता. And दूसरा, the only reason why I tend to differ from probably reality versus what he is showcasing, if he is, I have not heard him saying मैं 4 घंटा 6 घंटा सोता हूँ.
द रीज़न जब उन्होंने वो क्रिएटर अवार्ड्स किए थे ना, हाँ जी. राइट, उसमें उन्होंने ओनली थिंग ही स्पोक फ्रॉम माई परस्पेक्टिव वॉज ऑन स्लीप, वेरी टोल्ड वन ऑफ द क्रिएटर्स, यार सोने पे भी तो कुछ बना दो, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्लीप. तो आई डोंट थिंक ही मस्ट बी स्लीपिंग. ही मे हैव सेड दैट मैं रात को 4 से 6 घंटा सोता हूँ, विच कुड बी ट्रू, सर्केडियन रिदम वाइज आई विल अग्री, बट दैट ही इज नॉट टेकिंग लिटिल बिट ऑफ स्लीप हियर एंड देयर. आई डाउट for him to run a country, he will need to be his sharpest best. So I doubt he would be sleeping for less than 7 hours. Why him? Jeff Bezos sleeps for 8 hours. To get our best performers, from our Cristiano Ronaldo to Lionel Messi to Virat Kohli, you name an athlete, they sleep for 8 hours. Sir, sleep को लेके when you mentioned about the Indian culture very specifically, office culture में ये है कि अगर तुम 4 घंटा, और ऑफिस क्या इन जनरल, मतलब मैं और मोहित भी डिस्कस कर रहे थे कि मैंने उसको बोला कि मैं 3 बजे सोया हूँ कल रात को और 8 बजे उठ गया, ये मेरे को हाईफाई कर रहा है कि भाई सेम. अब ये कोई हाईफाई करने वाली बात है नहीं, करेक्ट, ठीक है. बट अब ये इट्स सो हैपेंड दैट आई स्लेप्ट एट 3, गॉट अप एट 8. फॉर पीपल आर एज इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, एंड आई ऑल्सो हैव डन इट पहले कि यार ये तो भाई 5 घंटा सोया हूँ ब्रो, मैं तो कम सोया हूँ, मैं तो बहुत कूल हूँ, कम सो के भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है मेरा. वाई इज़ इट दैट द कल्चर और द नॉर्म इज सेट कि अगर तुम कम सो रहे हो तो तुम कूल हो या फिर तुम ज़्यादा काम कर रहे हो, वर्सेस इफ़ यू आर हैविंग 7 to 8 hours of sleep every single night, then you are looked down upon. मतलब why is right being looked down upon and why is wrong being perceived as cool? like as always in most of the things, because you don't know what right is. And I told you the reason why society sleep as an image issue is because we don't know why we sleep. We think sleep is a passive state of mind. Through podcasts like this, I am sure the same Mohit tomorrow will not give you a high five. मत देना. 8 घंटे नहीं सोते हो आप? कितने घंटे सोते हो आप? मैं जनरली 12 से 1 बजे सो जाता हूँ और 8 से 9 बजे उठता हूँ. Good. So I am saying as more education and awareness around sleep will go, I am hoping. So I often hear this. Best line I hear is, I'll sleep when I die. I have to tell them, sleep or you will die. Narrative change होना होगा, टाइम लगेगा. आपने बोला ना इंडिया में कोई स्लीप प्रेस्क्रिप्शन नहीं देता है, मेडिकेशन देता है, एंड कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव में समय लगता है. बट आई नाउ फील, thanks to Virat Kohli wearing a whoop and talking about importance of sleep, thanks to Narendra Modi talking about the importance of sleep, thanks to Jeff Bezos or Elon Musk glorifying the fact that, or very proudly saying they sleep, Bill Gates very proudly saying that I sleep for 8 hours. The more people talk about it, the more change will happen. When somebody comes and tells me that yaar मैं 4 घंटा सोया and expects, for example, accolades for him, I tell him, बेटा के कभी नहीं बोलते कि फॉर मी अंडर स्लीप इज इक्विवेलेंट बॉडी एंड वी टेक प्राइड इन डूइंग दिस, एंड दैट नैरेटिव नीड्स टू चेंज. एंड आई थिंक लॉट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीपक, लाइज one with our parents to tell us the importance of sleep. They are also caught in this mechanism because they have not read, they have not learnt about sleep. They feel you should sleep like them. They are not telling you that you are different than me, but sleep for 8 hours बेटा. यार दीपक आप 2 बजे सोते हो तो यार 10 बजे के पहले मैं आपको नहीं उठाऊंगी, कुछ भी हो जाए. एक वो चेंज होना पड़ेगा. करेक्ट. दूसरा मेरा व्यू है, अवर मेडिकल सिस्टम विल हैव टू एम्ब्रेस स्लीप. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ हेल्थ इंश्योरर, I will give everybody a Whoop free or a sleep tracking device free. Or I will devise an app which tracks your sleep, or it tracks when you do this. And when I track your sleep, I will say if your sleep is consistent, your premiums will go down by 25%. Because I know you will live longer. You will be healthier. This is perks of being both in health and in finance. But I'm just saying that sleep needs to become mainstream. As I said, sleep के ऊपर Google करो 10 बुक नहीं मिलेगी. Nutrition के ऊपर 40,000 बुक है. Are you writing a book on sleep? No, I wish someday I will. यार हम लोग तो मैसेंजर्स है यार. Have you not thought of writing a book? Do you not in terms of as a finance, as a revenue move नहीं,
just as a move for awareness. I will at some point of time, yes. What But is your big? Sorry, go on. No, go ahead. What is your biggest aim in life right now? My purpose in life, or so one obviously is to live 75 to 85 in the best of my health, where I can do everything. So I have a whole list of activities I want to do between 75 to 85. क्या है? Dr. Peter Attia calls this as your marginal decade, right? So for example, I have list of things. So for example, I told you I want to sit on the ground and play with my granddaughter. I like to run. I have run about 40 half marathons. So my one of my ask is between 75 to 85, I should be able to run a 10K. At the age of 75 to 85, I should be able to travel on my own, which means I should be able to carry my cabin luggage or my backpack without a stick. I should be able to walk from the counter to the plane. I should be able to lift my carry-on bag and put it in the overhead cabin. I don't want anybody else's support. My job is I want to start. I don't want to retire. I want to be working last day of my life. I want to start a new venture at the age of 80. From a physical point of view, as I said, I want to spend as much more time doing activities with my grandkids than being there. I want to share all the wisdom of my generation. I love to learn नई चीज़. I keep doing all my courses, and when I do my courses, I go there. So अभी मैं एक course कर रहा हूँ breath work, where I will be going to Ireland, Dublin, on a course, 3-day course on breath work. But that requires physical energy. I will need to go, travel, stay. I go twice a year to US to attend longevity seminars and summits. When you go there, these are very interesting. They are not just pure talks. There is this whole exhibition hall where the latest of science and technology comes. You have to try things out. आइस बात लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम लोग. मेरे को विम ऑफ के साथ हर साल टाइम स्पेंड करना है ऑन आइस बात, इवन एट द एज ऑफ. So there is a list of things that I want to do in my marginal day. That is what my real purpose today is from a health point of view. From a wealth point of view, yes, I also want to continue to probably make my hundreds of crores or whatever you call it. And how long did you think to like ये सोचना कब शुरू किया था in terms of ये सोचना मैंने किया था जब मैंने डॉक्टर पीटर आटिया का कोर्स किया था अर्ली. एंड उस अर्ली में, एज आई सेड, एवरीथिंग कम्स डाउन टू द वाई. इफ योर वाई स्ट्रांग, यू विल फिगर आउट द हाउ. It all begins with your objective. My objective is to increase my health span and not my lifespan. The moment that objective got defined, but to come to that objective, I said I made that chart. I know at every decade what my daughter's age will be, what my granddaughter's age will be, and what activities I can do at that age. वो पूरा चार्ट बनाया हुआ है. Then I did my marginal decade का chart. What is the activities that I want to do? Now the more you do, you will get a sense कि यार हाँ, अब ये एक तो है विश लिस्ट, ये करना है, बट उसके लिए मेहनत आज लगेगी. I'll give you an example. We spoke of VO2 max, right? And VO2 max also declines with age precipitously. The difference between at your age, if you are at the bottom, which is completely sedentary, to somebody who is very active, the difference in your VO2 max is 50%. And that 50% difference comes at every age. So at my age, at 75, 85, I don't want to, I want to be among the top 5% of VO2 max, right? Which means I want a VO2 max at that point of time of about 35, 40. अगर मेरे को 35 जितना VO2 max चाहिए, if I have to run a 10 kilometer at the age of 75, I will need a VO2 max of about 35. आज मेरा VO2 max about 45 होगा. और ये जो डिक्लाइन होती है, there is no way I can achieve a 30-35 का VO2 max at the age of 75. I have to take my VO2 max from 45 to 60. ये डिक्लाइन भी हो रहा, मेरे को इंक्रीज करना है. तो इंक्रीज करने के लिए मैं वीक में 2 दिन जोन 2 करता हूँ, एक दिन HIIT करता हूँ, VO2 max ट्रेनिंग करता हूँ. So a lot of things that I try to do today is defined by that objective that I am doing. But मेरा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग. कुछ भी करके I want to live as much longer because spending time with my daughters gives me the most happiness. So उनके लिए, मेरे को अपने लिए जीना है, उनके लिए नहीं जीना, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी. And I keep saying this, right? Most people will say we have one life. I completely disagree. I think we have one body. Again, when you change that narrative, एक बहुत beautiful quote है कि all behavior is belief driven.
If your belief changes, your behavior will change. My belief change that I want to live longer for my daughters, my behavior will automatically change. Henry Ford ने बोला था, believe you can, believe you can't, either ways you are right. So change your belief, your behavior will change. So my belief is, at least I want to. So I wrote one post on LinkedIn where I said, yeah, I'm doing all of this, and yet tomorrow you may hear I died of a heart attack or something. मैं जा रहा था, बस ने उड़ा दिया. But I will still die with a sense of accomplishment that I tried what was in my hand. I may still not live longer because human body is very different. ये फॉर्मूला नहीं है कि मैं ये सब करूँगा तो लंबा जीऊँगा, बट अगर मैं ये नहीं करूँगा तो जल्दी मरूँगा, वो सही है. So the point is, I don't want to die for want of trying because my why is very strong. Unfortunately, very few people have that why. Because जिस दिन ये why नहीं चेंज होगा ना, तब वो एक समोसा क्या खा लेते हैं ना. One life, enjoy. एक दारू और पी लेते, एक बियर और पी लेते, एक घंटा और कम सो लेते, एक नेटफ्लिक्स का एपिसोड. Because we want maximum ROI for the time we are awake. And that's why I am trying to extend that ROI. एक ही जिंदगी है ना, एक जिंदगी नहीं है, एक शरीर है. Bill Bowden, the co-founder of Nike, said that. A lot of people say, यार मैं exercise करूँ, मैं तो athlete नहीं हूँ. He said, if you have a body, you are an athlete. It's a very interesting book. Shoe You've Dog read is that? a Yeah. very interesting book. I think Phil Knight and Bill Bauman have absolutely nailed, and this talks a lot about building a business to actually cracking down and finding a problem, finding a solution for it. और सबसे इंटरेस्टिंग बात बुक की है कि वो 600 पेज का बुक है और 300 पेज तक नाइकी वर्ड का जिक्र ही नहीं है, which is absolutely phenomenal. तो but again, coming back to again nutrition and diet and lifestyle, I think one of the last few things that I want to discuss is sweet cravings. खाने के बाद जो मीठा खाने का मन होता है. So that is one, and is how can we make sure that we have sweet cravings and still eat the right sweet possible to ensure a healthy lifestyle. B, in terms of our parents' health, what can we as children do to ensure that they live a healthy, good lifestyle and not lead a very sedentary lifestyle? Okay, I'll give you my take. So यार ये स्वीट टूथ के लिए तो you have to first go and thank Horlicks, Bonvita, Cerelac, Pediasure, because जब आप 6 महीने के थे तब आपको Pediasure पिलाया गया था, Cerelac पिलाया गया था, उसमें चीनी थी. You don't need it, but आपको आदत तब से लग गई है. Nobody is born with a sweet tooth. गलत. हम लोग तो कलकत्ते से हमको बोलते हैं यार नहीं भाई. You get into a sweet tooth because okay, evolutionary जाते हैं स्वीट टूथ पे. जब हंटर गैदरर्स थे तो जब एनिमल्स नहीं मिलते थे तो फिर हम प्लांट्स से अपनी ज़िंदगी चलाते थे, राइट. तो जो दिखता था उसको मुंह में डालते थे. कभी कभी हम लोग ने कुछ डाला और हम मर गए बिकॉज वो पॉइजन था. अपने को पता नहीं था इस प्लांट में या इस हर्ब में या इस, बट उन्होंने एक चीज़ देखा कि जब भी मैं कोई चीज़ स्वीट खाता हूँ विच इज़ बेसिकली फ्रूट, मैं कभी नहीं मरता हूँ. सो स्वीट इज़ गुड. If you move further down evolution, fruit were our friend in times of extreme cold. Not just our friend, even animals' friend. जब बहुत ठंड होती है, you can't venture out, you hibernate. इतनी ठंडी में यूरोप में या आप आइस एज जब आई थी, आप कैसे जाके हंट करोगे? सो मदर नेचर ने आपको एक जीन दिया फ्रुक्टोकाइनेस करके कि भाई तेरे को जब समर आए तू फ्रूट ज़्यादा खा लेना. फ्रूट में जो शुगर है उसमें 50% ग्लूकोज है, 50% फ्रक्टोज है. ग्लूकोज आई वी डिस्कस्ड इज योर बॉडीज प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी. इट्स जॉब इज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो दैट यू एंड आई कैन blink an eye, move our fingers. Fructose, which is 50% of sugar, उसका एक ही काम है to store as energy. It can't be used as energy. उसका एक ही काम है आदमी को मोटा करो. Olden days में it was a blessing. So the moment आपने फ्रूट खाया, उसका फ्रुक्टोज है वो फ्रुक्टोकाइनेस को एक्टिवेट कर देता है. यूरिक एसिड इज इट्स बाई प्रोडक्ट एंड उसका एक ही काम है जाके फैट में कन्वर्ट हो जाओ. योर gut cannot digest it, it goes to the liver and get converted into liver fat. Which is why today you will see after till 1983 आपको पता है जो बहुत दारू पीते हैं उनका लिवर खराब हो जाता है.
वो अमिताभ बच्चन का पिक्चर भी था ना, जादू दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है. In 1983 they started seeing the same disease in kids. The first case of NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, was seen in kids. This is a time when fruit juice in Tetra Packs came into our life. So as kids started eating, having more, अगर आप शुगर केन और एथेनॉल विच इज़ अल्कोहल और शुगर के प्रोसेस में बैक एंड में जाओगे, यहाँ शुगर केन है, शुगर केन का जूस बनता है, उसको बॉईल करते हैं, मोलासेस आता है, मोलासेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू रॉ शुगर, molasses get converted into ethanol. Both are kind of metabolized in our body in the same way. चाहे आप दारू पीते हो या fruit juice पीते हो. Which is why the disease of alcoholics is now seen in kids. 22% Indian kids have NAFLD. 22% Indian. 50% of overweight kids have NAFLD. A disease hitherto seen only in alcoholics. Right? So, and what is this percentage in Western countries? It's probably similar or a little higher. When I say kids, I am talking of urban kids. I am not talking of Of course. Therefore, the point being, anything sweet evolutionary is good. It came forward. एक टाइम में sugar was very expensive. ये राजा महाराजा पोप्स खाते थे. As sugar production increased, prices kept coming down, and the talab to have sweet was so high that हर एक चीज़ में लोग चीनी घुसाने लगे. यार इन्फेंट 6 महीने के बच्चे के फॉर्मूला में भी आप चीनी डालते हो, शर्म आनी चाहिए ना. बट वो बच्चे को आदत लग गई शुगर की. Lot of, I'm sorry I'm cutting you, a lot of kids nowadays क्या, a lot of kids have had the habit of having Cerelac when they're like 2 months, 6 months, 8 months. Is it healthy? Cerelac per se has no problem. Problem is in that Cerelac they put sugar, which is the problem. Now imagine, same Cerelac. In Europe they don't put sugar, in UK they don't put sugar, but in India they want to put sugar. क्यों? Regulations allow them. Yeah, I don't have any problem with Cerelac. The reason is they are operating as per the rules of the government. The government allows them. What is the alternative? Don't have sugar. Cerelac 6 ही महीने के खिलाना बच्चे है. को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको चीनी दे रहे हो नहीं दे रहे हो. वो माँ का दूध पी रहा है. If the mother has stopped lactating, आप उसको फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, उसको क्या फर्क पड़ता है चीनी दो या नहीं. क्यों देती है अभी भी? Why do kids? आदत. Is it because of? एक दिन आप कोई बच्चे को शुगर वाला चीज़ खिला दो, आपकी मजाल है, नेक्स्ट डे आप उसको नहीं दोगे और वो चुप बैठेगा. तो अब स्वीट टूथ से भी स्टार्टेड. द स्वीट टूथ स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. अभी तो 6 महीना हुआ नहीं कि आप आगे बढ़े तो आ गया हॉर्लिक्स कॉम्प्लान. तो is it because of lack of awareness? Absolutely. And convenience. But the bigger problem is all these products have been marketed as they are healthy. They were allowed to do so until about 6 months back. Yeah. कोई भी ad देखो आप, Complan, Horlicks, whatever, all these drinks की, everywhere they will show kids is growing taller, faster, stronger, माँ और बेटी दौड़ रहे हैं, बेटे ने दो माँ को. Ultimately the messaging is, if you drink this you will be stronger, you will grow taller, faster, and it has as much sugar as a can of Coke has. But because the laws of the country allowed them to put that imagery, now they have said you cannot market Horlicks as healthy drink. अब change आया है. Do you think? I'm sure the brands also know that it's unhealthy, and then they market it because So people this is watch how TV. the brand plays it, right? Yeah. Brand is saying, "Yeah, I am following." Government has recruited a body called FSSAI. Right. उसकी जो रूल्स है उसको मैं फॉलो करता हूँ. अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यार ऑल द ब्रांड्स हु आर कमिंग आउट विद अ एड हैव टू फिल अप एंड फाइल अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑन एग्जैक्टली दिस. डू यू थिंक व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग इज ट्रू? अब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, आ रहा है चेंज. And I'm sure with people like you and Revant, who's food farmer, and a bunch of other health creators who have actually gone out there and shared the truth as to what is being said on the label versus what actually is present, is something that there's a huge difference in. And I'm sure we need more आएगा. awareness. Everything, यार, compounding takes time. Correct. Which is what I tell people. It will take time. But I'll also be very honest, Deepak. I don't think we can take these people on.
We are making a small difference, and I'm very happy that even if it's impacting 1,000 lives, I am happy that those 1,000 lives will be healthier. But look at the budget that they have of each of these companies in terms of marketing and communication. मेरे शायद मिलियन फॉलोवर है, रेवांत के 2.5 मिलियन फॉलोवर है, दोनों को मिला के 3 मिलियन है, उसमें भी कॉमन होंगे. तो यार मिला के 2 मिलियन है, 20 लाख इन जनता ऑफ 150 करोड़, क्या चेंज लाएंगे? But that's exactly what I'm trying to say, right? Like you also But mentioned, इसका it takes time, compounding but it's होगा. compound effect. Let's be, आएगा चेंज. बट द पॉइंट इज नाउ दैट यू आर यूज्ड टू इज वेर यू से मेरे को स्वीट टूथ है. Now यार, I am not here only to discuss problems, right? So I am saying, okay, sweet tooth है. What are the things you can do so that the force, I can blunt that impact on your health? Correct. So I always tell people, never have sweet on an empty stomach. When your stomach is empty and you eat a mithai or a chocolate or a fruit juice or anything, immediately the glucose, sugar में 50% glucose है, 50% fructose है. तो glucose will immediately get absorbed in your bloodstream. क्या हो गया? 5 ग्राम 15 ग्राम हो गया. Insulin comes into play, all hell breaks loose. फ्रुक्टोज का तो कोई मेरे पास आंसर ही नहीं है, वो तो सीधा जाएगा लिवर में, लिवर फैट बना देगा. नाउ सेम, लेट्स टेक, कलकत्ते से है तो लेट्स टेक रसगुल्ला, राइट? या संदेश की बात करते हैं. यही संदेश आप एम्प्टी स्टमक पे खाओगे और सेम संदेश आफ्टर द मील खाओगे, क्या फ़र्क पड़ता है? जब मैंने मील के बाद खाया, अब मैंने रोटी खाई, सब्जी खाई, सैलड खाया, दही खाया, तो अपने स्टमक में एक मैश बन गई है. अब मैंने संदेश खाया तो ये इमीडिएटली अब्जॉर्व हो ही नहीं पाता. पहले तो ये खाना अब्जॉर्व होगा, फिर मेरा नंबर आएगा. सो ये खाने का ग्लूकोज स्पाइक जो होगा वो आएगा, लेकिन ये मिठाई का जो ग्लूकोज स्पाइक है वो आने में टाइम लगेगा, नंबर 1. नंबर 2, इसका जो फ्रक्टोज है उसको भी टाइम लगेगा स्टमक से निकल के लिवर में जाने के लिए. तो आई ऑलवेज टेल दिस टू पीपल दैट व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन अराउंड हेल्थ, कॉन्टेक्स्ट इज की एंड डोसेज मेक्स द पॉइजन. Context is key. No sweet is better than sweet. Sweet on an empty stomach is worse than sweet on a filled stomach. Third thing, when it comes to sweet, suppose वॉक कर रहे हो, एम्प्टी स्टमक है, यार अपने कलकत्ते में रसगुल्ला की दुकान दिख गई, उसने बुला लिया और खा भी लिया, देन व्हाट कैन यू डू? गलती तो हो गई, क्रेविंग था, मेमोरी थी चाइल्डहुड की, वॉक कर लो 10 मिनट. वाई? सेम मैकेनिज्म. ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हुआ, उसको डिस्पोज करना है. जब मैं वॉक कर रहा हूँ, दोज मसल्स नीड एनर्जी, ऑल दैट एक्सेस ग्लूकोज विल बी बर्नड. सो द बेस्ट थिंग आई टेल पीपल इज, यार मिठाई खाना है, खाने के बाद खाओ या वॉक कर लो. वन मोर वे टू ईट स्वीट, जो अपने बंगाली मिठाई में ये गुण है, या शायद सारी इंडियन मिठाई में ये गुण है. आप देखोगे वो मिठाई कहीं ना कहीं वो प्रोटीन और कार्ब के साथ मिली हुई आती है. रसगुल्ला किससे बनता है? पनीर से, मिल्क से बनता है. तो उसमें मिल्क में से जो पनीर है वो प्रोटीन है. जब उस प्रोटीन के साथ आप शुगर देते हो तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है. लड्डू खाते हैं, बूंदी इस बेसन, बेसन को आपने तला और उसको फिर आप जो तलते हो, किस में तलते हो? घी की चाशनी में, और फिर उसको आप घी की चाशनी में डुबेते हो. तो घी इज़ ग्रेट फैट. Whenever you have sugar with fat, the spike is much lower. राजस्थान में आप घेवर, सो इंडियन ट्रेडिशनल मिठाई आप देखोगे ट्रेडिशनली घी से बनती है. एंड हमारे पूर्वज में वो विजडम थी कि द मोमेंट आप फैट के साथ शुगर को मिक्स करते हो या गुड़ को मिक्स करते हो तो उसका इम्पैक्ट, अगर आप हमारे खाने में भी देखोगे, हमेशा मिठाई लास्ट में आती थी या खाने के साथ आती थी. करेक्ट. कभी भी पहले नहीं मिठाई खाते थे. करेक्ट. अनलेस दिवाली है या सेलिब्रेशन है तो आपने मिठाई खा ली, इट इज़ फॉर सेलिब्रेशन. सो देयर आर मल्टीपल वेज. वन मोर वे, बहुत शुगर क्रेविंग है या आपको लग रहा है कि यार आज तो खाना है शुगर, तो विनीगर इज़ योर फ्रेंड. विनीगर इज़ एसिटिक एसिड. इट हेल्प्स यू ब्रेक डाउन द शुगर स्लोली. गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कम कर देता है. तो आपको पता है मिठाई खाने जा रहा हो या आइसक्रीम खाने जा रहा हो, तो यार एक ग्लास में थोड़ा सा विनीगर, थोड़ा सा सॉल्ट, यू नीड अ स्ट्रॉ टू ड्रिंक इट, अदरवाइज इट डिकेज योर एनिमल. पी लिया, उसके बाद खाओ आइसक्रीम. योर द ब्लंटनेस, द शुगर स्पाइक हुआ, इट विल बी 30 to 40% लोअर.
30 to 40%. यस, बिकॉज एक चीज ये करता है कि आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो करता है, दूसरा इट विल डिपॉजिट दिस ग्लाइकोजन फास्टर, इट अलाउज मसल टू अब्सॉर्ब द ग्लाइकोजन फास्टर. एंड आई सेड अगर आइसक्रीम ही खाने जा रहे हो तो यार वॉक करके चले जाना, फिर वॉक करके आ रहे हो तो यार मल्टीपल वेज टू मेक. व्हाट आई टेल पीपल इज द स्वीट्स टू अवॉइड. Which is? सस्ता स्वीट, Which is again? डेयरी मिल्क फॉर एग्जाम्पल. रात को आप जागते हो ना, डेयरी मिल्क मत खाना दीपक. मिठाई खाना तो रसगुल्ला मंगा लेना ना स्वीट बंगाल से, या मिष्टी दही मंगा लेना. द रीज़न इज इफ़ यू लुक एट दे आर ट्राइंग टू सेल डेयरी मिल्क को 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़, राइट. वो 15 रुपये में उसको पैसा भी कमाना है. तो अगर आप डेयरी मिल्क का पीछे का पैकेजिंग देखोगे तो देयर ओपनिंग बैट्समैन इज शुगर. हु इज़ देयर रनर फॉर 1 डाउन, हु इज़ देयर विराट कोहली, पाम ऑयल. मिल्क तो उसमें 1% भी नहीं है, बोलते डेयरी मिल्क. द पॉइंट इज द चीपर योर स्वीट द हायर द कॉम्प्रोमाइज ऑन द इंग्रेडिएंट क्वालिटी, विच इज वाई से बाई योर स्वीट फ्रॉम अ गुड ओल्ड मिठाई वाला एंड ईट फ्रेश स्वीट्स, राइट. खाओ ना ठंडी के मौसम में गाजर का हलवा खाओ. गाजर आ गया, घी आ गया, चीनी भी आई, बट ये सब मिल के जब आप खाते हो तो उसका इम्पैक्ट इज़ वेरी डिफरेंट. सो आई विल नेवर ईट फॉरेन स्वीट्स. आइसक्रीम, अब भी मैंने एक लिंक्डइन में पोस्ट की थी. आपको पता है क्वालिटीज़ के आइसक्रीम आर नॉट इवन आइसक्रीम. Okay. What are they called? In their packaging, I am not saying anything. What is it called? Frozen desserts. Because for it to be called ice cream as per FSSAI, you have to make it from milk. Would you believe quality walls के ice creams, majority of them, सस्ते वाले are not made from milk. They are made from vegetable oil. वो आपको तेल और चीनी खिला रहे. तो उसको भी तो 15 रुपए में बेचना है, फिर उसको रिटेलर को पैसे देने हैं, फिर उसको पैकेजिंग के पैसे करें, फिर आप तक वो आइसक्रीम पहुंचाना है, मार्केटिंग भी स्पेंड करना है, शेयर होल्डर के लिए भी पैसा बनाना है. तो दूध बेचारा कहाँ से. तो मैं बोलता हूँ अमूल का आइसक्रीम खाओ ना, 100% मिल्क. ईट क्वालिटी स्वीट्स. चॉकलेट खानी है, आई नो डिफिकल्ट है, गेट योर चॉकलेट्स फ्रॉम अ यूरोप. इंडिया में भी मिलती है, शायद एक्सपेंसिव, तो अच्छा है ना, एक्सपेंसिव है, कम खाओ. लेकिन उनका कोको की क्वालिटी में एक बहुत फ़र्क है. आप यूरोपियन स्टैंडर्ड्स देखोगे, जब लोग फार्मा की बात करते हैं, पीपल लुक एट USFDA दवाई में. व्हेन इट कम्स टू फूड स्टैंडर्ड, यूरोप इज नंबर 1. यूरोप में कोक का कैन इतना है. आपने कभी पूरा कोक पिया एक साथ? नहीं. What I'm difficult? not even a fan Generally of soft also drinks, but in people general, no, drink I it can't. because they paid 30 rupees. Correct. Not because they need. यूरोप में उन्होंने कैन का साइज ही छोटा कर दिया. 30 ग्राम कोक है ना, उन्होंने साइज ही 1/3 कर दिया, तो 10 ही ग्राम शुगर है अब इसमें. एक पी लिए आपकी सेटिस्फाई हो गई, फिर आप दूसरा पियोगे ही नहीं. सिंगापुर में जाओ, दे हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन शुगर, ऑन डायबिटीज. सो दे हैव दिस न्यूट्री गाइडलाइंस ABCD. And not just on packaged products. Even when you go to a Starbucks or a Yakun Kaya toast there or a toast box there, anything that is selling coffee drinks or tea drinks with sugar, they have to put ABCD, depending on how much sugar that is. 0 sugar A, more than 10% sugar D. If it is D, it has to be displayed prominently. If it is C and D, on the front of the pack. If it is D, you cannot advertise only. The same Starbucks Frappuccino you will drink in India and you will drink in Singapore has 50% less sugar. But isn't the regulation same across No. countries? No. Completely different, and which is where the role of the regulator comes in. But yeah, the government has to run the country. For it, that it needs taxes. Correct. If you look at income tax, only a very small percentage of people pay tax. But consumption पूरी country करती है. Correct. So वो GST जो मेरे को मिलता है, वो बहुत हाई है. तो पूरी कंट्री को फीड करने के लिए माई प्रोडक्ट नीड्स टू बी सस्ता. फॉर दैट माई रेगुलेशंस कैनॉट से. सो गवर्नमेंट वांट्स पीपल टू ईट मोर so that it collects more taxes. Correct. So somewhere at $3,000 of per capita GDP, I cannot think Indian regulators can think like a European regulator.
बिकॉज दोनों की समस्या अलग है. मेरे को तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना है, उसके लिए आई वांट मोर फैक्ट्रीज टू कम. करेक्ट. और फैक्ट्रीज तब आएगी जब आप और मैं बहुत ज़्यादा चिप्स खाएंगे. तो एक तरफ गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स कि यार ये शुगर, बट यार वो शुगर मिल भी चलनी चाहिए, तो मेरे को यूपी गवर्नमेंट को उसके केन टैक्सेस मिलते हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड में हम लोग लिव कर रहे हैं, विच इज़ वेर आई कीप कमिंग बैक दैट यू आर द CEO ऑफ योर हेल्थ. यू हैव टू टेक कंट्रोल. मैंने एक रील की थी टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन ऑन पेरेंट्स. व्हाट कैन यू एज अ आइडियल सन डू फॉर योर पेरेंट? आई थिंक सबसे पहला चीज़ तो बहुत सिंपल है यार, जितना ज़्यादा घर में बना सकते हो उतना बनाओ. सो जब घर में बनाते हो, आपका मेन कल्प्रिट क्या है? तेल, वेजिटेबल ऑयल, राइट. ऑयल में अगर आप जाओगे तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज सैचुरेटेड ऑयल और सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट. अनसैचुरेटेड इज बेटर. सैचुरेटेड मतलब इट एट अ रूम टेम्परेचर इट विल सॉलिडिफाई. अनसैचुरेटेड नहीं होगा. अब अनसैचुरेटेड में पॉली अनसैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड है. अगर आप तेल देखोगे तो तेल में पूफा आता है, पॉली अनसैचुरेटेड, विच इज़ गुड बट नॉट इन ऑल ऑयल. अब उस पॉली अनसैचुरेटेड में मैंने डबल क्लिक, you have something called as linoleic acid and linolenic acid, omega-3 and omega-6. This is where your carbon bond breaks. So if it breaks from the last chain, third level, it is omega-3, sixth level, it is omega-6. But ये तीन का difference creates massive havoc. Omega-6 और omega-6 are also required for your body. जो हमारे सारे fats हैं, they are used as source of energy and for a lot of the protection अराउंड आवर ऑर्गन्स. उसके लिए फैट चाहिए, कुछ फैट ज़रूरी है. सो बॉडी में आपका जो पूफा 6 है या omega-6 है और omega-3 दोनों नेसेसरी है. आपके ब्रेन के लिए omega-3 ही चाहिए. omega-3 आपको फिश ऑयल से आता है, वॉलनट से आता है, और कहीं से omega-3 मिल नहीं सकता. तो इसका एक रेशियो बताया गया है एज पर साइंस दैट इट इज़ गुड. जनरली से 4:1 इज़ गुड. 4 times 6 versus 1 times 3. Now what happens when this ratio goes up, when that 4 becomes 5, 6, 7, 8, 9, 10, that much more vegetable oil or this omega-6 is circulating. Like your glucose circulating latches onto the protein, it plays the same role. The first, because it is circulating, it needs transportation. Because it is fat, it cannot travel on its own inside the blood. Correct. Right, so it's hydrophobic. तो उसको एक vehicle चाहिए जिसके अंदर में वो transport करता है. So it gets transported in the something called as LDL. आपने कोलेस्ट्रॉल में सुना होगा LDL कोलेस्ट्रॉल. सो LDL का जो L है लास्ट और HDL का, इट्स कॉल्ड लिपोप्रोटीन. सो इट ट्रेवल्स इन अ लिपोप्रोटीन व्हीकल. इट ट्रेवल्स अलॉन्ग विथ कोलेस्ट्रॉल. प्रॉब्लम इज नॉट इन कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज गुड, देर इज नो सच थिंग एज बैड कोलेस्ट्रॉल. But because this cholesterol travels with this fat which is called triglycerides, which comes from the tail that your parent will eat, excess tail that you will eat, it needs to be transported. Because इसको फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए it has to go to the cell, but वो जाने के लिए इसको ये ट्रांसपोर्टर चाहिए, एक टैक्सी चाहिए. ये जब टैक्सी आपके ब्लड वेसल में अटक जाती है, दिस इज वेयर द स्टार्टिंग ऑफ हार्ट अटैक हैपेंस. सो अगर कम होगा तो कम टैक्सी चाहिए, तो कम अटकेगी. सो व्हेन योर पूफा 6 और omega-6 goes up, you need more transportation, so it is bad. Ideally 4:1. Second problem with omega-6 is there is something what we call as half life of a product. Like कॉफ़ी की quarter life is 8 hours. So अगर आपने कॉफ़ी पी, उसका जो कैफीन है, उसका 1/4 of the caffeine will remain in your system after up to 8 hours. After 8 hours it will go. 75% चला जाएगा, 25 और 8 घंटा रहेगा. Omega-6, which is what we get from vegetable oils that most Indians use in their house, उसकी half life which is 50%, guess कितनी होगी? कॉफ़ी की 8 घंटा है, तेल की 5 से 10 साल है. तो आपके सिस्टम में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है. जितना घूमेगा उतना चांस ऑफ इट्स गेटिंग रिटेन्ड. I don't know what that ratio is for the population. One study said that the ratio in Indians is 36:1, जो 4:1 होना चाहिए. मेरे हिसाब से it is 300:1. Wow.
Your single biggest killer after sugar is vegetable oil. So you asked मैं पेरेंट्स के लिए क्या करूं? So इसका भी एक फ्रेमवर्क है. Maximum fat that you should use should be ghee. घी में ओमेगा 6 एकदम कम है. घी का स्मोकिंग पॉइंट सबसे हाई है. घी बियॉन्ड what we talk about in terms of this has so many other health benefits. So make ghee as your core cooking medium, but कुछ एक खाने घी में अच्छे नहीं बनते. Next best divine thing is coconut oil. You know coconut के ट्री को ये लोग कल्प वृक्ष बोलते हैं. Can you imagine the beauty of coconut oil or coconut itself? Coconut से coconut oil बनता है. कहाँ मिलते हैं आपके coconut tree आपको? You'll see always around the ocean. तो सारी salinity of the ocean को ये convert करके आपको इतना मीठा पानी देता है. क्या क्या मतलब क्या पेड़ है. Just imagine. It is the best electrolyte drink. After we run half marathon, we drink coconut. मेरे को अपना थोड़ा carbs भी मिल जाता है, high in potassium. उसकी जो मलाई होती है, उसमें मैजिक है. वो मलाई जब ड्राई हो जाती है तो अपने को ड्राई कोकोनट मिलता है. तो वो जो मलाई इज मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, दैट इज फ्यूल फॉर योर ब्रेन. फर्स्ट थिंग व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, माय ब्लैक कॉफी विल हैव घी एंड कोकोनट ऑयल. इट्स द बेस्ट फ्यूल फॉर योर ब्रेन. सो फ्रॉम योर ब्रेन व्हेन यू कम टू योर नेक, योर थायराइड फंक्शन कोकोनट ऑयल से बेटर होता है. इट्स अ प्लांट सोर्स, सो इट हैज जीरो कोलेस्ट्रॉल. इट इज ग्रेट फॉर योर हार्ट हेल्थ. इट हैज लॉरिक एसिड, ग्रेट अगेन फॉर योर हार्ट हेल्थ. देन यू गो टू योर गट, इट कीप्स योर गट हैप्पी. चाहे आप कोकोनट वाटर पी लो, कोकोनट ऑयल यूज़ करो कुकिंग में, रिमूव वेजिटेबल ऑयल्स. वो भी नहीं अगर आप टेस्ट में शायद, देन गो टू व्हाट आई कॉल एज योर ऑयल्स दैट वी हैव यूज्ड थ्रू जनरेशंस. जैसे अपने कैलकाटा में मस्टर्ड ऑयल खाते थे, करेक्ट, मस्टर्ड से बनता है, या ग्राउंडनट ऑयल या पीनट ऑयल. देन कम्स द वर्स्ट वेराइटी, सीड ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, जो आपको मार्केट में मिलता है. So if you want to do something for your parents, that's the first thing I will say. Do home cooking, reduce the oil. And एक मीडियम रखना टू सी when do you know आज खाने में ज़्यादा तेल है. बहुत सिंपल है. जब आप खाने में खाते हो ना, नहीं ये करना, एक आप पनीर घर पे आपके अगर कोई आती है कुक करने, उसको बोला पनीर की सब्जी बनाए, और एक आप बाहर से मंगाना पनीर, एक ही प्लेट में डालना दोनों को, फिर आप रोटी से खाना. जहाँ ज़्यादा येलो और ऑयल रह गया, दैट मीन्स दैट हैज़ मोर ऑयल. यू विल सी आउटसाइड फूड हैज़ 3 times मोर ऑयल देन होम कुक्ड फूड. एंड दैट ऑयल ऑब्वियसली इज पाम ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल. वो घी नहीं यूज़ करने वाला है. सो फर्स्ट थिंग, डू दैट. सेकेंड, आई से यार वी ऑल लाइक टू टेक अवर पेरेंट्स आउट फॉर फूड. अगर आप उसको बाहर ले जाते हो तो अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाओ. डोंट टेक देम टू चीप रेस्टोरेंट्स. चीप रेस्टोरेंट चीपर में the food may taste great because उसने फ्राई कर दिया है, नमक ज़्यादा डाल दिया है, but you know they have compromised on the quality of ingredient. Why the same paneer butter masala in a good restaurant is at 400 and in a bad restaurant 100? पनीर का कॉस्ट तो सेम ही है, but बाकी सब जगह प्रॉब्लम हुआ है. That's what I also say कि यार do that. Third thing I will say यार, as we observe and learn from our parents, you can do that as well. Be an ideal child, they will observe and learn from you. Not too many people will listen to me. The best thing you can do is gift your parents a gym membership. They are losing muscle mass. Imagine your mother at 65 breaks her femur or your bone. 50% chance, Deepak, you will not see her in 12 months' time. The only way to do arrest this is help them. Gym is too intimidating for them. Allow them to lift heavy. अगर आपकी मॉम ग्रोसरी बैग ले रही है तो लेने दो उसको, फट से छीन मत लो. These are ways to strengthen your muscles. And last thing I tell people is have at least one meal with your parents. There is nothing like those memories when you sit with your parents and you eat. वो हंसी मजाक, वो exchange of information. यार at a certain age they want to be involved. They want to feel that they are part of your life. I think we miss that because we are so busy. And I'm saying as a parent, you will want to give more attention to your kids, and which is fair, and you should. But at least reserve 10-20% of that attention for your parents by just having one meal.
उस मील में एटलीस्ट होपफुली टीवी मत चालू करना, मोबाइल मत लाना, खाली आधा घंटा लगता है यार. The moment they feel happy, a lot of their problems have even been taken care Yeah, of. true. This has been an eye-opening episode for me, Prashant. Thank you so much for taking out time and doing this. My pleasure. I sincerely hope that everybody who has not only clicked on this episode but has stuck through till the end, I can assure you, you must have gained a lot of insight. So one thing that I want to keep handy is keep a pen and paper handy while you are watching this episode, so that you'll have a lot of notes to take. But thank you so much, Prashant, for doing this. It's been an absolute pleasure hosting you. And I would love to do a repeat episode because there's a lot that we've missed out on. I shut my iPad way back in the start of the episode because I knew this is not going to be put to use. But yeah, to all the listeners, thank you so much for watching. Comment down your most favorite part in the comment section. We come up with a new episode every Friday at 6 p.m. So let us know how you like this episode, and I'll see you around next Friday. Thank you so much. It's a wrap. Your final thoughts? Yes, thank you. It's been an honor and a privilege to be here to talk to somebody of Deepak's ability and a fellow Calcuttan of all, right? So we had a lot of conversations. I hope you get value out of it, and if you not, then we'll try harder next time. A part 2 coming soon. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Cheers.